Hi everyone. I can see people are joining in. Hmm, Okay. Okay. So can someone just hi Sonika, can someone confirm if they are able to hear me so I can start the live? I'm able to see myself, but I'm not sure if people can hear me. Hi Kavita. Am I audible, people? Okay. Okay, great, great, great. So today we are doing something which, we have been planning for quite a lot of time now. In fact, we were working on it and we were kind of deciding whether we should do it on YouTube, Instagram, and all that. So today what we are doing is three of us are going live. So it is going to be me, Sneha, and Parvati. All three of us are going live, and I will be, as always, host who will be looking at your comments, etc. And Parvati and Sneha are going to make two mixed media projects using same supplies. So what they are going to do is they are going to use the same transfers, and Parvati is going to use black gesso, and Sneha is going to use white gesso. So you guys can, see like how different projects can you make with the same supplies, but make it your own. So that's the whole idea, that you can see our products in different light, in different lights, etc. So that's the idea. A lot of people had been asking that, we use this particular transfer. So this is what we are going to use. Now, again, links, etc., of the product, etc., I will be showcasing when we are in live during the live. Also, before I get in and introduce them, I just wanted to remind you guys, because we have been getting a lot of queries on when rust, moss, and patina effect will be back in stock. Hi, Sneha. So this is a patina effect. This is back in stock. This got back in stock just today morning. Okay, so this is back in stock. And our rust effect paste, which is this particular sample, if you want to see. So this is our rust effect paste. This, as well as this was one sample I had made. So this is rust effect paste. This is also back in stock. So in case you are interested, I will share the link for you all. Just give me a second. Okay. So you should be able to see it on the screen along with QR code in case you are interested to buy those. Our Moss Effect paste, which also people have been asking, is going to be back in stock in another week or so. It is being manufactured as we speak, so it is going to be ready soon. So this is a sample of our Moss Effect paste. Okay, so that's what I wanted to tell you, before we start our live. Now, I hope you are excited for this live. I am super excited, and all three of us are extremely nervous because this is some new trial that we are doing. So, I hope you enjoy it. And yeah, without further wait, let me add Sneha and Parvati into the live. So, I'll just add them. Hello. Hello, Hello. how are you guys? I think we spoke just few minutes back, but Kind, how are you? kind Good. of nervous. Yeah, yeah. Yeah, Kind Exactly. of excited. But yeah. mixed मेरे को emotions है. हाँ, so I am also so used to live now कि तुम मुझे बोलोगे ना नींद से आके आ जाओ तो मैं आ सकती हूँ, बट अभी आज मेरे को अलग लग रहा है क्योंकि all three of us are doing it live together on YouTube. This is not something we have done earlier, so I am also quite Yeah. nervous for that. Instagram की अभी आदत पड़ गई है. हाँ. So I am able to see chat, and मैं reply करते रहूंगी और आप लोग मतलब करते रहना, as always. If there are questions, I'll ask you guys, and if you guys want, take ahead, speak something, and then start, etc. I will like take a back seat now. Uh, कुछ ऐसे बोलने के लिए तो है नहीं. You have already showcased the transfer that we'll be Yeah. using.
Yeah. So we So have sorry. already cut it out. Right. We have made our fussy cut elements, so we can't Hmm. show you guys the transfer. That's why Khyati is doing it for us. Right. We'll be doing just one or two transfers in front of you. Rest everything Hmm. we have fussy cut, and we have kept it ready so that we don't waste much time in doing all the fussy cutting. या एंड एज ऑलवेज इसके साथ हमारा चिट चैट तो चलता ही रहेगा हमको तुम 4 घंटे बिठा दोगे तो भी हम बंद नहीं होंगे सो आई होप you are excited for that as always and as always I'll be looking at chat so in case you have any queries in terms of products in terms of techniques right now is the best time because you have two mixed media artists online who can answer your queries and one product knowledgeable person also online who can answer your queries okay guys so हाँ on to you मैं अपना screen off करूँगी I'll be live as like my voice will be live but you won't be able to see me because those guys they'll have a bigger screen so I'll take a back seat now guys Yes. हाँ I'll yeah तो स्नेहा कैमरा फ्लिप कर दे. फ्लिप कर लेट्स ले. स्टार्ट. हाँ. ओके. hi Suprita हेलो hi गाइस. Kavita Can you guys see my table? yes Okay. थोड़ा आपका shadow box मतलब either move your camera on the right or move your item on the left हाँ बस बराबर ठीक है. हम्म। स्नेहा आपका ओके. अभी मेरे को कुछ चेक करना है फ्रॉम लाइक अ व्यूअर्स पर्सपेक्टिव ओके. लेट्स सी. कैन यू ओके सी? यस मतलब आई कैन सी द मैट एंड थोड़ा व्हाइट पार्ट भी दिख रहा है ब्लैक पार्ट भी दिख रहा करेक्ट. यस. ओके. है ओके परफेक्ट So I सो didn't गाइस. have a this thing shadow box, guys. So I am using मेरे बेटे का टॉय का बॉक्स. So this will be हाँ kind दैट्स of आल्सो अ a गुड आइडिया गुड अपसाइक्लिंग आइडिया. yeah, आप. an upcycling kind of project. I wanted some depth, so I was sure that I want some kind of shadow box because what I am trying to make is kind of a 3D project. राइट So that is why we are going with this. Yes, Neha, राइट you can go ahead. So mine is a proper IKEA box. I had one, and वाह Parvati Parvati का आइडिया रिच था. किड्स लेट्स डू ऑफ अ शैडो हैदराबाद बॉक्स. हाँ. रिच किड्स ऑफ हैदराबाद और नो. अब हमारे यहाँ पहले ओपन हुआ, हम क्या करें. हाँ हाँ मतलब आई मीन मेरा बहुत गांव के बाहर हो जाता है वरना मैं भी आइकिया में ही पड़ी होती मैं सबको बोलती हूँ हैदराबाद में तुमको पास पड़ेगा. हाँ मैं आऊंगी तो मेरा लिस्ट में रहेगा आइकिया आना बिल्कुल बिल्कुल. So guys, So, I am trying to do a scenic view because it is very okay, castle and fairies, mushrooms. right. So we So are, Sneha, you are also doing like a 3D thing, or are you doing a kind of, canvas like I yes, was? yes. Okay, 3D. So Okay, this is okay, a like cardstock, and that will go okay, inside the box. okay, perfect. Got it. मतलब ये लेआउट जैसा बनेगा और वो Layout 3D जैसा. लेआउट और वो बॉक्स में चला Correct, जाएगा correct. अंडरस्टूड So ठीक मैंने मेरा इसको तो पूरा बॉक्स के अंदर ही बनेगा. And हाँ if you notice, just over here, I've applied some white gesso. yeah. This राइट is so that my transfers properly onto it. Black gesso के राइट ऊपर none of your transfers works, so you राइट need a light base. So I've already applied white gesso here just so that करेक्ट I can get the image on it. Rest परफेक्ट everything we'll be going ahead and doing black gesso. ओके So yeah. कूल कूल So guys, So, I'm guys, trying this to is a get tip for those of you who are using black gesso or dark chalk paints. Your transfers will never work with that. Whenever you are using transfers, think decoupage napkins. जैसा decoupage napkin work करता है because they are translucent, same transfer work करता है. I know we kind of repeat this again and again because trust me, बहुत customers ये गलती करते हैं. They ruin a lot of transfers. Then they come and ask us.
So that is why, we give that knowledge out whenever we are doing a live. So on to you, Sneha. Sorry to cut you. now I'm just fussy cutting so that और थोड़ा पास में कर रही हूँ इमेज के सो दैट कलर्स यूज करेंगे तो उसके हाँ, आसपास ही कलर्स रहें मोस्टली सीमलेस लगेगा. यस और मोस्टली मैं ग्रीन्स येलोज एंड ब्राउन्स पे स्टिक करना चाहती हूँ व्हाट अबाउट यू Okay. पार्वती Yeah, same here because the transfers they have these colors mostly. So I'll करेक्ट also be sticking around with these colors. या Yeah. सो So, I mean, this would be interesting to see same colors with a black background and white background, kitna alag dikhega. So for those of you who have joined in live, this would be a good exercise to see side by side two colors behaving completely different based on आपने white डाला है और black डाला है, which is, what today's live is all about. यस सुप्रीता मेरे को एक्चुअली क्राफ्ट स्टोरेज का बहुत मन है बट दैट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट बॉल गेम मतलब उसके लिए यू नीड टू बी इन लाइक अ बिग मास मार्केट आई विल बी ऑनेस्ट यू शुड बी लाइक एन आइकिया लेवल टू डू इट बट हु नोज मतलब एस्पिरेशंस तो बहुत है देखते हैं क्या क्या कंप्लीट होता है but definitely that storage solution is something that I'm really want to do it but for those of you who are not like you are okay with other storage solutions, we do sell storage solutions on our website. There is a storage करके एक separate category on our website, so you can check that out and see कि तुमको क्या लेना है क्या नहीं. We do sell like for dyes etc. We sell like metal sheets for storage solution and then we sell boxes and brush boxes and all that. So you can check that out. so if you see these lines that is Hmm. my I want to make some mountains and all so that it looks Okay. like कहीं पहाड़ों में कैसल है Nice. Interesting. Mine is a bit tricky because I am doing it on a cardboard. So I Yeah. need to be yeah extra careful. Right, right. I was about to say that ki this is also good way for those of you who are new to why Gesto. You can see the difference. She has only added it in a certain section. The white part that you see is Gesso. So अगर आप देखोगे तो वहां पे गत्ता पूरा it acts like the gesso acts as a barrier और गत्ते ने पूरा पानी नहीं चूस लिया है whereas साइड में आप देखोगे तो देखोगे कि गत्ते ने पूरा पानी ले लिया है and वो पूरा मतलब it could crumble so why gesso this is a really good example on why you need gesso right so that your base will not take all the water all the paint all the moisture when you are working. See, in her case, it would have been easier if she would have done complete white, but फिर उनको उसके ऊपर black करना पड़ता, तो it made no sense. So I understand बेचारी पार्वती का flight in that way. yeah See, true Sneha का transfer हो गया है, so you can see how beautifully it has come out. Now, Sneha, this is paper or is it like a plasticky this kind one of is material? like cardstock white cardstock this White one is cardstock. Okay. 300 gsm you can अपना use dual texture. huh so you can use Okay. any uh, like paper cardstock or anything मैंने mixed Right. media वाला use किया है Okay. and Perfect. जस्ट Perfect. क्योंकि थोड़ा सा हैवी कार्ड स्टॉक यूज करो मेरे हिसाब से Right. so Right. that अपना Which can take water which and can all that. take water colors even texture Hmm. paste and all so I Right. don't want to Right. like ruin the paper और फिर ट्रांसफर ही Right. खराब हो जाए so I don't want to do Right. that Right. और स्नेहा इज इट पॉसिबल टू टिल्ट द कैमरा मतलब क्योंकि आपका थोड़ा वर्टिकल हो रहा है रादर देन अच्छा हॉरिजॉन्टल ये हाँ like हाँ this हाँ हाँ okay लाइक दैट okay okay परफेक्ट और थोड़ा मतलब हाँ उसको सेंटर में ले लेना एक सेंटर बार में देख के करते हो करते हाँ हाँ परफेक्ट
So I'll move the paper. Just Okay. So my transfer is also done. Okay. So you both are using actually the same background. So it's going to be interesting to see how different the projects look. correct, correct. So I am excited, but as a viewer, I'll be honest. So guys, I'll be using cement texture paste for the mountains. Okay. ओ गॉड, Okay. मैं यही You उठा के also? रखी थी, बट मैं कुछ और यूज करती हूँ अब। नहीं नहीं तो इट्स अच्छा, ओके, मैं नहीं दूसरा नहीं ले करो लेती ना, हूँ। उसमें क्या हो गया? अरे लेकिन अरे क्यों दूसरा? मतलब इट्स कम्प्लीटली ओके। तो मतलब अरे सैंड ले लो, मतलब जिसको नहीं, अगर मेरा ऐसा है एक्चुअली तो। सैंड मोस्ट ऑलमोस्ट खत्म होने आया है, सो खत्म हो गया, अच्छा। हाँ, तो मैं मेरे पास ऑप्शन नहीं है, बट पार्वती गो फॉर सीमेंट ओनली ना, क्या हुआ तो? नहीं, हाँ। मैं अच्छा, फिर कुछ सॉरी और ही करती। सुप्रीता। लेट्स। अच्छा, अच्छा, मतलब इतना ना गाइस, और इतना लोड मत लो। इट कुड हैपन कि तुम लोग सेम प्रोडक्ट भी यूज करो, बट हाँ आई एम वो श्योर वो ब्लैक ड्रेसों के कारण लुक completely अलग आएगा। मतलब यस। क्योंकि हमने एक्चुअली, फॉर गाइस हु आर वाचिंग इट लाइव, वी हैव नॉट डिस्कस्ड। हम लोग ने द ओनली थिंग वी डिस्कस्ड इज द ट्रांसफर दैट वी आर गोइंग टू यूज, एंड Parvati is going to showcase a black one, and Sneha is going to showcase a white project for you. So it may happen that certain products may overlap. So it's completely okay यार, इतना टेंशन ना। एंड सी, दिस इज अ गुड हैक जो पार्वती कर रही है। अगर जैसे शी सेड इट वाज ट्रिकी टू डू ट्रांसफर ऑन दैट मटेरियल, तो उनका परफेक्ट नहीं आया था। सो शी टुक सम कॉपिक मार्कर्स एंड शी इज काइंड ऑफ ब्लेंडिंग इट, सॉरी नॉट कॉपिक, द रेगुलर अल्कोहलिक मार्कर्स, एंड शी इज काइंड ऑफ ब्लेंडिंग नॉर्मल इट स्केच पेन से भी सिमिलर हो कलर। जाएगा, नॉर्मल करेक्ट। आपके ना वाटर कलर से हाँ, भी हो स्केच पेन जाएगा, से भी करेक्ट। सबसे हो जाएगा। आई हैव एक्रिलिक दिस से भी हो हैंडी, जाएगा। मेरे पास ही पड़ा है, तो मैं करेक्ट। इसलिए कर रही हूँ। सो अभी ये पता भी नहीं चल रहा है कि वो परफेक्ट नहीं था ट्रांसफर, राइट? सो दिस इज अ गुड हैक, especially for those जिनका कभी sometimes if transfer doesn't come out perfectly. Suprita, yes, sorry, I forgot to mention कि pre-order today is the last day. We have had a couple of people who said they had sent us today morning pre-order list. So today we are accepting. If you got an email saying ये product discontinued है, तो you can of course send a new list also. But by today end of day, we are expecting payments for pre-orders. Uh, for we are going to close pre-orders today. So by today end of day, all payments should be done. And yes, our pre-orders for brands like Stamperia, Prima, Tim Hortons, Ideology, Sizzix, Spellbinder, everything is open as we had mentioned on our WhatsApp group. If you are interested, you can send us a list today. But as I said, the payment needs to happen today if you want to confirm your pre-order. Okay? So मैं वो guys, भूल गई थी एक्चुअली before बोलना. doing this cement texture paste, I did Okay. gesso first, so that Okay. the paper doesn't get ruined. क्योंकि I don't know how much texture paste it will like कितना hold कर सकता है. So Right. एक barrier, for a barrier I've used gesso. Okay. Okay. I'm using this stencil, butterflies and bricks. Okay. The number is 84. I'll be using Hmm. some brick like structure around this. Okay. So I had thought about actually brick one, but I've already used it a lot of times on live Yeah. also. So, Okay. Great. so I thought I'll go hands free this time. Nice. नहीं मतलब दैट्स इंटरेस्टिंग, वो ब्रिक बना रहे हैं और आप माउंटेन्स बना रहे हो. सो अगेन like how we interpret the same supplies in different ways, and this is actually what I really wanted to showcase with our life. So I'm so happy that finally हम लोग के इतने brainstorming session से कुछ फायदा हुआ कि we are able Faida. to show people. Correct, correct, yes. So I'm just taking it, the cement paste in my Okay. palette and Okay. just moving Shading it. the mountains. Okay. Perfect. So Parvati, which paste are you using? Sorry, I missed out on that. I'm using our white texture paste. Okay.
I'll be coloring it over. So all Hmm. I need is the texture, वो brick like structure. So Okay, any texture paste that you have handy will work. perfect. And So, these guys, are what another? Yeah, please go ahead. Please go. no, so these are very मतलब बहुत rounded and मस्त वाला वैसे brick. I हाँ want it हाँ to हाँ. be kind of broken kind. Uneven. Yeah, हाँ, yeah. तो Yeah. मैं जानबूझ के इसमें I'm just adding some texture so that it looks Interesting. kind of uneven. डिस्ट्रेस ना अच्छा Yeah. लगेगा. Yeah. अच्छा, interesting. So, yeah, sorry, I was just saying for those of you all who are watching the live that while they are using the supplies, I'm trying to add the links and the QR codes on the screen itself. So you guys can, use that QR code and directly check out the products if you are interested. So this is something that we wanted to do. So because, during live we get a lot of queries and हम लोगों को बोलते हैं कि search कर लो, but people find it difficult. So हम लोग ने category wise QR codes डाल दिए. You can directly scan that and go on website and check it out. And अभी मैं चुप बैठूंगी ताकि तुम दोनों बोल सको. नहीं नहीं, you talk. वो We भी are more focused, I feel. ओके. एंड दैट Hmm. इज आई थिंक आल्सो इम्पोर्टेंट कि हम क्या यूज कर रहे हैं लोगों को पता True, है. true, true. मतलब मुझे एक्चुअली मेरे को पर्सनली है ना ये लाइव्स में बड़ा मजा आता है दो लाइव्स वेयर आई फील स्ट्रेस्ड इज व्हेन आई एम मेकिंग अ प्रोजेक्ट बिकॉज इट हैपेंस लाइक आई एम लुकिंग एट द कमेंट्स आई एम मेकिंग अ प्रोजेक्ट एंड या आई एम चेकिंग एंड रिप्लाइंग एट द सेम टाइम क्वेश्चन आता है तो फिर मुझे 2 सेकंड रुकना पड़ता है सोचना पड़ता है आंसर फिर बोलो सो इट इज बड़ा वो मतलब अभी मुझे लगता है कि आदत पड़ गई है. Now, what I'm doing is I'm taking हम्म. some texture paste on my palette knife and ओके. I'm just applying it either udhar on the walls also so ओके. that it gives me that brick like matlab roughly broken brick like structures राइट. just using the palette knife. सो बेसिकली आपका वो 3D इफेक्ट आएगा ना कि ब्रिक्स बाहर Right, से अंदर जा रहा right. है. राइट. इंटरेस्टिंग. थोड़ा वो डब्बे को आप नीचे मूव कर सकते हो पार्वती थोड़ा आपका स्क्रीन के बाहर चला गया. हाँ परफेक्ट. स्नेहा थोड़ा ऊपर ले सकते हो पॉसिबल. या एक मिनट हाँ में ये मूव कर देती हूँ. हाँ. थैंक यू कविता आई एम हैप्पी दैट पीपल आर फाइंडिंग द यूट्यूब लेआउट इजियर बिकॉज उस पे हमारे बड़े चर्चे हुए थे कि यूट्यूब पे करें कि इंस्टाग्राम पे करें. सो आई एम हैप्पी दैट पीपल आर फाइंडिंग दिस बेटर. And I think for those of you who want to see later on also, it will be easier, while if you are using the same techniques again later on. So it will be easier to see. आई So थिंक just to remind you guys, ये हमें और एक क्वेश्चन बहुत आता है कि will the paste hold its peaks? Will it pass easily through stencils and all that? I know it's a very basic question, but we still do get it. So here you can see on the left, Sneha has used it with palette knife, and you can see it is holding its peak, its shape, everything. And on right, Parvati is passing it through stencil, so you can see how easy it was to pass it through stencil. So you can see both the ways. Yeah. Now I'm starting to apply my black gesso and create my background. हाँ. स्नेहा आपको शायद म्यूट करना पड़ेगा. सॉरी सॉरी अच्छा हो गया. या मुझे अच्छा. हाँ रियलाइज हाँ हुआ. हाँ वो इस बार नहीं चलेगा. So I'm roughly applying it ओके. because I'll have colors on top of it, but I want it परफेक्ट. to be, thoda dark. So I need the black gesso to cover the base so that ओके. वो dark shadowy effect रहे. परफेक्ट. ग्रेट.
So, Shaila, for decoupage, I would suggest if you are a completely beginner, don't go with paper. Paper will take decoupage paper is a little bit more difficult than decoupage, transfers or napkins. Napkins is again more difficult in terms of ki wrinkles, not, everybody is not able to master wrinkle free. Yeah. So, I would suggest go first with transfers and design you pick and choose like florals are evergreen. So अगर आप florals use करोगे on a box or things like uh, बुद्धा यूज करोगे वो काफी ही ट्रेंडिंग चीजें हैं सो जस्ट टू शो यू लाइक दिस इज द लाइव दैट आई डिड a couple of weeks back on a decoupage box and this is our transfers which I have used and as you can see it is floral and again I don't do a lot of decoupage even though I do like understand what is decoupage etc so florals are always a good starting point क्योंकि वो आप किसी को भी गिफ्ट कर सकते हो and you can go as colorful as you want you can go as vintage as you want depending on आप किसके लिए project बना रहे हो and if you see florals again right we have a lot of options and अगर आपको specially plate पे देखना है how to do it on coasters etc just go on our YouTube channel which is HNDMD you will find a lot of tutorials where we have used our transfers on acrylic bases, on plates, on coasters, MDF, everything. So just आप जाके उधर decoupage का playlist भी देखोगे ना on our channel, you will find a lot of options. I'll try and give you a link while we are waiting or while we are doing live. So I hope that will answer your question. Now I am applying it on all four walls also, so that जो अंदर का project है, when you see from any side, um, Hmm. it is uniform and it looks like a single piece inside, Okay. right? So on all four walls also I am applying my black gesso. Okay. Now I'll also quickly mute myself and do a I'll Sounds good. dry it, Huh, dry it out. Okay. because my texture paste is not dried, and I can't apply the gesso over it unless and until it is dry. Huh, So I'll chalo. just mute myself. So for the query asked on decoupage, by Shella, I am just adding links so you guys can see the playlist that I was talking about, as well as I'll share the live that I was talking about. Uh, so guys, Huh. I'm using moss paste. Okay. This is the brown one. Yay! Yay! Mass face. And of course, this is going to be on the mountains, and it is very well going with the theme. So of course, it's helping me. So Hmm. yeah. So I'm very like मुझे बहुत इच्छा हो रही है थोड़ा सा snow effect देने की but this scenery doesn't have any snow or some anything like that Yeah. so Yeah. बट I'll एक्चुअली decide दिस यू गिव मी अ गुड आइडिया कि अगर हमको स्नो भी करना होता ना तो हम वो जब जहाँ पे ग्रीनरी उस पे आप वाइट वो white ड्रॉप्स डाल के आपका स्नो हो जाता है एक्चुअली correct मतलब correct जस्ट समथिंग टू correct इफ फ्यूचर इफ यू वांट टू यूज द सेम डिजाइन इन अ स्नो वे correct so जहाँ पे ये वाले flowers हैं we can go with snowflakes or something like that राइट राइट सो स्नेहा एक्चुअली पेंटेड इट विथ ग्रे सो वो ड्राई हुआ है तो आई थिंक इट इज रिफ्लेक्टिंग द लाइट इसके कारण आपको शायद थोड़ा वाइट लग रहा है कविता बट नो इट नो इज मैंने ग्रे पहले इसको किया है जैसो अच्छा कर अच्छा लिया है वाइट जैसो लगा है ओके हाँ ओके हाँ आई हाँ मिस्ड इट आउट या अच्छा या
तो you have done cement से mountains, then you added white gesso and अभी आप उसके ऊपर brown texture paste डाल रहे हो, right? Moss, yeah, Moss brown, right? moss brown, Perfect, yeah. So, perfect. and it's going with my brown and yellow theme. So Yeah. that's a good मतलब ये वो हो गए good one. महाराष्ट्र के माउंटेन्स हो गए गर्मी वाले Yeah, Sayadri. मतलब ये देख के मुझे वही याद है when we used to go in the afternoon to Igatpuri and all those places बेचारे हाँ, mountain I okay. used to feel so bad for them पूरे dry हो जाते हैं ना because ड्राई हो जाते हैं, इंटीरियर करेक्ट. ऑफ महाराष्ट्र में बहुत सूखा पड़ता है ड्यूरिंग ये तो इट इज हम्म. लाइक राजस्थान जैसा क्रैक्स एकदम ड्राई 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 वैसा ही Oh, लग okay, रहा है okay. एकदम So yes. So Yeah. Ninja, you join our WhatsApp group, dear. Taki to actually we were thinking of doing it on Instagram, but we decided YouTube is better layout so that you guys can see it on a bigger screen, etc. Instagram पे क्या होता है कि वो अच्छे से नहीं दिखता है, and we were not sure on the clarity and all that. Plus, this will, like YouTube remains longer. वो तो क्या है, एक बार feed से चला गया, then people forget. This you can always watch later on. So we wanted to do this on YouTube, and we are thinking like these kind of tutorials we could in future also do more on YouTube. So that later on, if you guys want to save it in your personal playlist, etc., it will be easier for you. So you can join our broadcast list, guys. Whenever we are going live, etc., we always inform people there that we are going live, so that you can stay connected in case of updates, etc. And also, if you see on our photo where we inform people कि हम लोग live जाने वाले हैं and all that, तभी हम लोग mention करते हैं कि हम YouTube या Instagram पे जाएंगे. So it's easier. Yeah, yeah. Exactly, Kavita. वो मतलब somehow Instagram for two people it's still okay, but with three people बहुत ही clutter हो रहा था. And with this we could kind of move around the screens, etc. Look at the comments, give you guys links and everything. So I thought this is a better way कि आपको अगर links चाहिए because a lot of time people ask for product links during live. आज ही मेरे को लग रहा है कोई नहीं पूछ रहा है जब हमने इतना सोच के रखा है कि हम आपको लिंक शेयर करेंगे बट दैट इज प्रॉब्ली बिकॉज we are already sharing links with you guys here while we are live. So I hope it's easier for all of you. And as always, guys, if you have any queries of a particular product, etc., please feel free to ask in live. आपको कुछ अच्छा लग रहा है तो भी आप पूछ सकते हो. मतलब I'm sure we'll be happy to just enjoy your comments and reply to that. So this transfer sheet number 523. It's called Vintage Ferry. So if you search CTDTS 523 or if you search Vintage Ferry on our website, you will find it. I've also added the QR code for transfers. So in case you are interested, you can scan that code and it will directly take you to all the transfers. स्नेहा आप शायद म्यूट पे रहोगे. Sorry. No problem. So I'm using the Mars Delight. Okay. So at the end of the day, mixed media है. मैं बिना stencil के I cannot survive. Right. And I feel Damas Delight अभी new favorite बनता जा मेरा रहा है. favorite है, current favorite, yes. Right. So मैं बहुत ये नहीं करने वाली हूँ. I'll be like some कहीं यहाँ पे कहीं वहाँ पे so that Okay. So this stencil that you are using is Damas Delight and the paste that you are using will be this is regular texture paste, white texture white paste. Okay. texture paste. Perfect. Perfect. So मैंने ये पहले से फर्स्ट कट कर लिया था this mushroom. So I'm just trying to figure out ये कहाँ जाएगा. Hmm. Mostly I want to do it like this. So थोड़ा texture paste we'll do here.
So, Neerja, you can, this is going to be saved down on our YouTube, since, we are doing it on YouTube. And the whole point हम लोग ने YouTube पे इसलिए किया है कि if you want to craft along with them later on also, you can do that. And I know you are very enthusiastic about crafting along simultaneously. So, I'm sorry that you kind of joined in late and you are not able to do it. Hello. We can hear you. Okay. So I've applied my black gesso. मेरा जो shadow box है, inside everywhere I've applied it, rough coat, Hmm. and I've left Hmm. some parts here because I don't want any of the edges to go off. So Yeah. I want the white to show अभी के लिए, and later Hmm. I'll be coloring it with some sky blue color or Hmm. something like that, so that it looks more, uh, Blended. more blended. Let's see what color. But abhi ke liye, I that's the reason why it is all white around. Right. So Neerja is saying it's going to be very difficult who to choose favorite today because both are coming out so well. अभी तो मेरा सिर्फ black black ही दिख रहा होगा. And it's not, there is no need for favorite. It depends on your mood. If you are in for something dark and moody, you can do something like Parvati. If you're for something fun and nature driven and peppy, you can do what Sneha is doing. Now So why these, restrict yourself just for one? yeah. Now these are some cardboard box का ही Corrugated. cut out. हाँ, corrugated sheet नहीं है. If you have the corrugated sheet, great. ये तो Right. मैंने literally cardboard को काट कूट के वो हाँ. करा है. तो Amazon के डब्बे जिंदाबाद. yes. So this will add some more texture and some interest to my background. So Right. Oh my I, God, मैं भी यूज करने वाली थी इसके लिए, like for तो base. करो. दोनों के नहीं दिमाग एक मतलब ही जैसे दोनों के चलते हैं, क्या दिमाग. करें. हाँ. नहीं बट वो सब वही होता है ना कि ये सब रीयूजेबल मिक्स मीडिया में देगी फंकी टेक्सचर सो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया नो. Yeah. Yeah. So that इसको base मिल जाए वो इस मशरूम को. राइट. So there is राइट. like नीचे ये है, and I wanted to use that green. Uh, Um, where is it? Yeah, this one with that cardboard हाँ thing, मॉस. moss. राइट. So let's see. अभी धीरे धीरे करते हैं वो. राइट. So मैं यहाँ थोड़ा सा ब्लू, थोड़ा सा ऐसा, not blue actually, कलर. yellow orange sky will do. ओके. And थोड़ा नीचे नीचे आते आते we'll go green. राइट. परफेक्ट. you guys can see my entire canvas, right? या थोड़ा जूम आउट हाँ मतलब इधर यू ब्रिंग इट डाउन या फिर थोड़ा जूम आउट इधर वर्क्स. ठीक है. हाँ. Okay. Neerja, that's the thing, even we were actually talking, and that is how we got a plan to do this because a lot of people, including myself also, even though I have been doing mixed media for so many years, हम लोग black base को use करने में डर लगता है. And Parvati, it's like her area of expertise. So हमने सोचा कि क्यों नहीं, kind of do it where you can see कि आप black gesso भी कैसे use कर सकते हो. And also, guys, use this platform, trust me, to ask any queries, how to use Black Gesso or how she's thinking while she's doing this, because lives are perfect medium for you guys to ask such questions, which you may not be able to ask later on when we are just posting a tutorial or something like that. And that is why I feel lives में आप पूछा करो. So, आपको फ्री में सब सीखने मिल रहा है, as I said. So guys, I'm covering this with clear gesso so Okay, that मैं color करूँ तो I don't want to ruin the transfer sheet. okay.
So So, मतलब आप can you elaborate like Sneha for people who don't understand like why you are doing gesso in the sense कि so अगर this नहीं करते तो कलर कैसे impact होता so I am going for clear gesso because अभी इसके बाद का step is my coloring. So if I right do white gesso or other texture paste, it won't show. So उस पे right ऊपर white आ जाएगा. So I don't want to ruin the design. So I'm right covering this up so that this will uh, will be a barrier kind of हाँ it's to like a that protective layer तो protective layer. कल उठ के ट्रांसफर Yes, वो कलर्स को सोख नहीं लेगा तो सोख अगर नहीं आपको लेगा. चाहिए तो you can always go with a wet napkin and you know remove all that color while it's wet and वो Yeah, चिपकेगा नहीं ट्रांसफर के चिपकेगा ऊपर नहीं. so that is Correct. why we are adding clear So gesso so and those of you who always ask this question I hope you know we are able to answer कि हम clear gesso कभी कभी क्यों करते हैं क्यों करते हैं. एंड क्लियर जेसो का एक ये भी पॉइंट है कि कहीं मैं कहीं और भी करूं, स्टिल hmm कलर विल बी देयर पेपर पे. yeah सो इट विल correct हेल्प मी yeah इन एनी either way. So right I always protect transfer आफ्टरवर्ड्स. सो मैं hmm. इवन जो मैंने फर्स्ट कट किया है उसको भी मैंने प्राइम कर लिया है सो दैट मुझे बाद में उसको आई थिंक उसकी केयर हो जाती है उसी समय. Hmm. So, gesso is one thing, guys, where I will always tell you कि अगर आप even though you are a beginner, get all three gessos, experiment with all three gessos because all three gessos are important. It will not be like normally, you know, with texture paste, we tell people कि आप white ले लो, sand and cement and all that. You can try later on. If you have white, it's a good place to start, or if you have a clear, it's a good place to start. But with gesso, experiment with white, black, and clear because all three of them are very different. Especially if you are a mixed media artist, then you will see the differences when you know you are doing projects. Hi, Khushbu. So, just for the sake of those people who attended a bit late, because I can see a lot of people have attended late. So, we are doing a mixed media live today, and the whole idea of doing a mixed media live today is we want to use the same transfer and kind of create a mixed media project, but with two completely different gessos. So, one where Parvati on your right is using black gesso, so her mixed media outcome is going to be very dark and moody background, which is right up her alley. And on the left, you will see Sneha using white and you know making a happy like a greeny browny mixed media, which is again her area of expertise. So that was the whole point of our life today to experiment with different kind of gessos and to show you how different projects turn out with the same supplies. सो गाइज सिंस आई डिड क्लियर जैसो आई एम लाइक Hmm. बिंदास मैं वाटर डाल सकती हूँ. मुझे उसका वो Right. ये नहीं है कि डर टेयर नहीं है. होएगा ट्रांसफर या हाँ हाँ सो या उस पे कलर आ जाएगा. हम्म, सो जस्ट प्ले विद इट. And I'm simply applying black gesso over my resin, mold okay pieces and all, so that I have a prime surface hmm, to play with colors later on. right सो माय टू कलर्स pumpkin orange and lemon tart. Okay. perfect Yeah. perfect And guys, you can use acrylic liquid acrylics also. hmm, So that is also a good option. right liquid acrylics will dry permanent so you know it will be Permanent. Yeah. yeah फिर तुमको layering if you want to do it will be easier for you. And also, whatever products we are talking about, speaking about, I'm trying to send the links in the chat itself. So, for those of you who are curious कि क्या products use हो रहे हैं, हम क्या search करें on the website, just follow that link and it will take you to that product or the category depending on you know क्या use हो रहा है.
बाय द वे अभी ठंड कैसी है पार्वती वहां पे? वो तो मैंने पूछना ही रह गया। अच्छा, शी इज हीटिंग सो दैट्स व्हाई शी हाँ, इज ऑन हाँ म्यूट। उसको ठंडा ही है हाँ, यार, उसमें कोई अच्छा। इम्प्रूवमेंट नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तो गर्म चालू हो गया। इट्स हाँ हॉट नाउ इन बॉम्बे। कल से चालू हो गया। यहाँ पे भी शॉर्ट मतलब मैं फैन लगाया आज। अच्छा। अच्छा, उतनी ठंडी भी होती है कि कभी कभी फैन नहीं, मतलब मेरा तो कूल डेस्क पे भी हमारा एक दो पे तो चलता ही है। बॉम्बे में उसके बिना जिंदा नहीं रह सकते। Correct. So I am using a little bit of cafe mocha so that I can drag ओके। this color little bit नीचे so that वो mountains हम्म, और ये क्या बोलते हैं उसको ठीक है। ये लगे अलग अलग ना लगे कि ये यहाँ कर दिया और वो वहाँ कर दिया। राइट, तो राइट, सीमलेस ऐसा हो। राइट। थैंक यू You शैलू, Shaila, and thank you, Shalu. So Shalu is like black jess, so is Paru मैम's favorite. अभी हमने बैक टू बैक दो ब्लैक जेस तो हो गए ना आई थिंक। हाँ पारो, थोड़ा आप जूम आउट करोगे क्या स्क्रीन को? मतलब बहुत जूम इन हो गया शायद। पूरा डब्बा नहीं दिख रहा। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा हाँ, ऊपर कर देती हूँ। हाँ, हाँ, परफेक्ट। दिख रहा है? हाँ, अभी थोड़ा डब्बे को राइट में कर लेंगे तो बेटर हो जाएगा। हाँ, थोड़ा और, मतलब वो बहुत ही एज एकदम ये हो रहा है। हाँ, ठीक ठीक है। है, ठीक है। Now, I'll be going in with um, chalk pins. एक ओके, जाप यूज कर रही हूँ मैं, फॉरेस्ट ग्रीन एंड वन इज हम्म, मॉस ग्रीन, ओके, and I'll again be going with some browns also. So this ओके, is chocolate syrup, right? cool. So I think today we are using almost everything decoupage and mixed media between the two of you. We have used watercolors, we have used chalk paints, gessos, all different kinds of paste. Yeah, I can't go true. with watercolors as such इसमें क्योंकि it Yeah. won't show through black Yeah, gesso. yeah, That's the reason true. why I'm going with my what do you say, chalk Sure. paints. Chalk paints because they are opaque in nature. Right, right. So even liquid acrylics dyes here won't work, CrafTangles liquid acrylics, because they are transparent in nature, Translucent. and Yeah. our chalk paints are opaque acrylics. So that is why she is picking opaque acrylics, which are chalk paints. So it is very important that you learn like what are the properties of particular products, before you start using them. वरना तुम्हें लगेगा यार कलर तो आ ही नहीं रहा है, बट कलर आएगा कैसे? क्योंकि आपने ब्लैक डाला है और उसके ऊपर आप ट्रांसपेरेंट कलर यूज करोगे तो, राइट? True. So very important to know your products. So as I go down, I'll use yellow and greens so that Okay. So Nijay is saying Sneha's background is giving full on spring vibes. yeah, और स्नेहा actually. का तो इतना मस्त लग रहा है पूरा। मेरा तो अभी आपका सारा विंटेज काला ही हो काला गया। ही है। एक्चुअली काले का वही प्रॉब्लम होता है ना, वो एंड के 15 मिनट में ही पता चलता है। हाँ, व्हाइट यू कैन सी द बिल्डिंग अप होना, इसीलिए वो व्हाइट इजियर भी लोगों को मुझे लगता है हो जाता है टू स्टार्ट ऑफ में। राइट, Yeah. राइट। और इस चक्कर में मैं वाइट पे ही रह गई, ब्लैक पे गई नहीं। अभी अगली बार हम लोग गोइंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन करेंगे कि आप ब्लैक या करना, एक्चुअली और इट विल बी चैलेंज। फन टू सी ना कि या कैसे होता है। ट्रू ट्रू नाइस। Initially, I never knew how to use white gesso. अभी तो मैं अच्छा, आई एम मोर इनटू white gesso। अभी black gesso काफी टाइम बाद मैंने लास्ट लाइव में यूज किया, एंड नाउ हाँ, हाँ, consecutively we are doing this. सेकेंड या Yeah, but yeah, I think it is relatively easier, to play with white gesso because वो या काफी it is more forgiving. फॉरगिविंग है। या Yeah, Forgiving and while doing you can change also, right? right. वो राइट, colors and everything shows True, through, true. so that So, that is या a big advantage so there. राइट, actually black में पहले से बहुत prep करना पड़ता है, like you have to be हाँ, ब्लैक का prepared कि क्या थोड़ा होने वाला ट्रिकी है। ट्रिकी बन जाता है थोड़ा। Yes. राइट। So the other uh,
liquid watercolor is evergreen. Evergreen. Okay. I'm going in with chocolate syrup chalky paint. So Okay. some on my elements and some on these corrugated sheets also, so that Okay. it doesn't look like proper corrugated sheets, and it Hmm. blends in with my rest of the background that I'll be creating. Right. So I think Mr. Dinesh Tripathi, I think he is your father-in-law probably. He says, nice Yes. creation, Parvati. Hello, uncle. Hello. Hello, Papa. Pranam. कविता भी वही बोले पार्वती का प्रोजेक्ट एंड में आएगा एकदम शो एंड में स्टॉपर की दिखेगा, तरह यस. बीच में मतलब with Sneha's it is gradual we can see the like you know it building up पार्वती का एंड में हमको अरे ये कैसे हो गया ये वैसा था. हो जाता है ओ. बिकॉज वी यस. रिमेम्बर हर वो वाला भी जिसमें हमने ब्रांचेस यूज किए थे ना उसमें बाद में मैं और पार्वती ने चैट पे वही बात किया यार एंड के आधे घंटे में पूरा लुक बदल गया तब तक मतलब हम सबको ऐसा लग रहा था कहाँ जा रहा है मतलब फिर यू नो then that's the या. beauty of mixed media करेक्ट, करेक्ट. एंड ब्लैक yeah जैसा तो है कि यू हैव टू लाइक प्रिपेयर एवरीथिंग. सो right so thank hello creation of colors and Kavita says Sneha your stenciling is looking fab and it is actually you know the damask is looking very pretty I would have हाँ, not thought बहुत वो ही प्रिटी लग अच्छा रहा है. जाएगा but सुंदर लग रहा है एंड द थैंक यू. कलर्स आल्सो बहुत ही yeah प्रिटी प्रिटी लग रहा है. बढ़िया तरीके से ब्लेंड हो रहा है एकदम ब्लू ग्रीन्स हाँ. और येलोस और थैंक यू. ब्राउन्स सो माय होल आइडिया वाज प्ले विद दीज कलर्स. राइट एंड ये वाला जो स्टेंसिल है बहुत सारे हम्म ब्रांचेस जैसा भी दिख रहा है. सो मुझे हाँ वो यूज करना था. एंड आई न्यू हाँ कि आएगा कि अरे ये वाला करंट फेवरेट हो गया है, बट हो गया है, अब क्या करें. हाँ नहीं बट हो जाता है मेरा भी ऐसे ही हाँ, हो हाँ. जाता है कोई आई टेंड स्टेंसिल टू. पकड़ लो ना हाँ, थोड़े दिन हाँ, वही हाँ. चलता है फिर आई गो होता देयर है लॉट ऑफ टाइम्स कि अरे ये या वाला आई एम कंफर्टेबल नाउ. मेरे साथ ऐसा ब्रिक्स में तो बहुत हो जाता है ब्रिक्स एंड स्क्रिप्ट वाली स्टेंसिल में तो आई काइंड ऑफ यू नो गो क्रेजी के मतलब वही यूज हम्म. करती रहती हूँ मैं मेरे भी एल्बम में वैसा ही हुआ है मैंने ब्रिक्स हर जगह ब्रिक्स ब्रिक्स लेके सीन बना दिया तो ऐसा हो गया मेरा थोड़ा टाइम हो गया था अभी ब्रिक्स यूज करके, सो हाँ आई थॉट लेट्स गो बैक टू ब्रिक्स. या No, but I'm liking that corrugated. It is looking very dark and moody, and you know, matlab, I can understand from a like a layman's perspective. The person who has not done mixed media, उसको देख के लगेगा पार्वती ये black black हो क्या रहा है? But क्या I हो know रहा at the है. end it will pull through. नहीं, मैं आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि कुछ बहुत अमेजिंग आने वाला है. हाँ, फाड़ू ही बनेगा end में. फाड़े, हाँ, फाड़ो. फाड़ू. Engineering Bombay slang. नहीं, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, बट आई कैन टोटली रिलेट. हम लोग ने तो ये सब लेकिन इंजीनियरिंग में ही सीखा था. अरे यार, पता है आज क्या फाड़ू प्रोजेक्ट मिला है? फाड़े. हाँ. एक्चुअली मेरे आसपास बहुत इंजीनियर्स हैं. अच्छा. सो मोस्टली मेरे सारे कजिन इंजीनियर्स हैं. माय हस्बैंड इज इंजीनियर. सो हाँ तो वो क्या नॉर्मल स्लैंग में भी आ जाता है हम लोग तो ऑफिसेज में करेक्ट. भी बहुत बार यू टेंड टू यूज दैट सो थैंक यू क्रिएशन ऑफ कलर्स सो क्रिएशन ऑफ कलर्स इज सेइंग बोथ आर लुकिंग फैबुलस थैंक यू. एंड कविता इज सेइंग फेरी मूवी का या फेरी टॉपिक बुक कवर लग रहा है यू कैन सेल टू बुक पब्लिकेशंस वाओ. हाँ स्नेहा, एकदम सही बता रही हूँ, बहुत ही सुंदर दोनों लग का रहा अच्छा है. लग रहा है और थैंक मुझे यू. ना आई लाइक इट हाउ कॉन्सेप्चुअली हम लोग दोनों अलग अलग कर रहे हैं कि मतलब अगेन यू नो आई एम प्रोबेबली स्ट्रेसिंग दिस मोर टाइम्स बट मतलब बहुत लोगों को है ना मिक्स मीडिया करने की इच्छा होती है बट कॉन्सेप्चुअली नहीं समझ पाते तो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट लाइक अ ट्यूटोरियल दैट वी आर डूइंग टुडे जहाँ पे वी अंडरस्टैंड के ब्लैक के ऊपर हमने चॉक पेंट क्यों यूज किया है या लेफ्ट में हम लोग वाटर कलर हम्म. क्यों यूज कर पा रहे हैं rather देन चॉक पेंट सो कॉन्सेप्चुअली अगर आप समझ रहे हो कि कोई ये प्रोडक्ट क्यों यूज कर रहा है विच वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट इन लाइफ so I think that will help you guys for those of you who especially want to you know learn more about mixed media and all that
Now I'm going in with forest green, the next Okay. color. And I am not waiting for my brown to dry because I want Interesting. the colors to blend in Blend. slightly. So Perfect. I am going in directly. Yeah. And guys, as always, if you have a particular query in terms of like what techniques they are using or what is the concept behind picking up a particular, product, etc., please feel free to ask us. And especially like live is a perfect place where you can ask us so that आपकी queries, live में ही answer हो जाता Now, see, I am roughly doing a blending. So, है. if you Right. see closely, you'll see जो Hmm. brush strokes है, I'm playing it ऐसे. So, हाँ. it is blending in my The जो अपना greenery. transfer था. So Right. now you can't make out the difference, right? It Yeah. looks Perfect. like it is part of my box itself. Yes. And So this is what you have to learn, guys. ये decoupage में भी काम आता है. For those of you who are watching this, this is the technique which even Anamika uses. I have used, even Sneha uses. So this is where you have to blend your castle with the background, right? So उस time पे stippling, ये basically stippling motion of brush बोलते हैं. कि your brush doesn't have a lot of water. It is fairly dry and it has a lot of paint on top of it. And आप ऐसे brush को ऐसे pounce कर रहे हो. So that helps in blending the colors. right, and it looks seamless post that. Yeah, yeah. And because I'm using black gesso, यहाँ पे वो थोड़ा वो shadow effect type भी आपको Mm, दिखेगा. right. And because I did not wait for my brown to completely dry. You can see both the Mm, colors blending in, and it is not giving. ये जो green है, this is actually nice and bright green, but right. I am kind of getting a mossy green uh, because Brown it के is, साथ blend हो. हाँ, right, but Right. it is not as light as the moss green. So we'll Mm, be coating it over with some moss green also. ये थोड़ा dark moss green type color मिल रहा है. So we are correct. basically playing in with our colors. Yeah. So you can see like, when you're blending, the colors look so different and colors will look so different on a white or a black background. So already since it is black, वो green थोड़ा कम muted रहेगा. Plus she's blending it with brown because the brown is not yet dry. तो Yeah, इसीलिए वो थोड़ा mossy green हो गया. and that is the reason why I didn't um, Dry it. dry the brown, because I don't Right. want it to be completely bright green. वो एकदम अलग Yes. दिखेगा. It is not something that goes with the rest of the elements that I Right. have in mind. So सो it depends. पार्वती थोड़ा वो डब्बे को ऊपर करोगे क्या नीचे का पार्ट दिख नहीं रहा है हाँ हाँ So it depends on what you are trying to achieve. If you want the green to be nice and bright, then maybe हम्म you dry your brown and then एड इट uh, yeah, and then add it. बट आई फील ब्लेंडिंग से इट विल बी बेटर लाइक आई एक्चुअली वुड सजेस्ट जो पार्वती कर रही है फॉलो द सेम स्टेप्स बिकॉज दैट इज हाउ इट विल वर्क टेक्निकली आप अगर ब्राउन डाल रहे हो फिर वो ब्राउन और ग्रीन मिक्स होके मॉसी ग्रीन हुआ है और अब अगर आप देखोगे तो इट इज बिकमिंग मोर ग्रीन because right now she's putting it from an area where there is not even brown. So that's way you can, create that gradient effect. Or blending is technically this. So guys, I'm trying to put a base for my mushrooms. Okay. So उसको एक ग्राउंड देना है मुझे, हवा में नहीं लटकाना. Hmm. So I think one can go at the back and one can be on the front. Right. So
I've also fuzzy cut that fairy and मैं उसको इस Hmm. वाले पे बिठाऊंगी. Right. Right. ठीक है. So स्नेहा ये आपके मशरूम्स और फेरी सब ट्रांसफर्स ऑन अ पेपर और कट On a रेडी paper, है yeah, राइट? same, the same paper which I used here. ओके. It's same. This is a little thick cardstock, okay? Right. So this is already like this is like an ephemera that she is going to use transfers where they're already cut and ready for you guys. Yeah. I'm also putting my fairy on top of mushroom only, okay? वो बनी ही इसके लिए. हाँ वो मतलब हाँ एग्जैक्टली खड़े वाले अलग है, वो Correct, खड़े हाँ. रख के आप खड़ा रख सकते हो, बट वो बैठने वाली फेरीज जो है वो बहुत क्यूट है, सो आई वाज Yes, श्योर कि yes. सब वही यूज करेंगे पहले. So I'm just एक पोर्शन में इसका एक लेयर निकाल रही हूँ so that हाँ. corrugated दिखे, अपने पास एक हाँ टेक्सचर आ जाए. And तो ये on लोगों को top, दिख सकता है कि जो पार्वती ने ऑलरेडी कर दिया था वो भी स्नेहा इधर दिखा रही है I'm कि वो doing it. डब्बे को Yeah, फाड़ के कोरुगेटेड इफेक्ट कैसे आता है, विच यू yeah. कैन यूज. Like, इतना अमेजोन का जो मंगवाते हो, use it. हाँ Yeah, रिसाइकल की जगह प्रोजेक्ट्स में डालो. correct. So what I'll do is मैं इसको हाफ करके एक पीछे लेयर एक और देती हूँ. हम्म. थोड़ा कैनवस को स्नेहा ऊपर मूव करेंगे क्या? हाँ Yeah. अभी थोड़ा दिखेगा बेटर. हाँ. So I'll go like this so that थोड़ा ओके. ऊपर नीचे ऐसा दिखेगा and we'll get a nice base also. हम्म. ठीक है. Let's stick this first and then I'll use moss effect. Same, अच्छा. the green one and the brown one. So I'm also getting a moss effect here, but I don't हम्म. have the paste. मेरा तो मैंने पूरा यूज कर लिया है, तो I don't have हम्म. the paste. So this is kind of an alternative how you can create your own moss चॉक effect. पेन. Yeah, या using the chalk pens. चॉक पेन. So you could use moss directly, like how Sneha is doing. You could create your own colors, like how Parvati is doing with chalk paint. And also you can create a mossy, like a watercolor effect, like how Sneha did with watercolors also. So again, all three you could do depending on how you want the look to come. And आपने white gesso use किया है कि black gesso use. सो नीरजा सिंह आज पारो विंग्स एंड गियर्स से फ्लोरल पे आ गई है. आज एक्चुअली हमको सेम ट्रांसफर यूज करना था ना इसके लिए, सो वी हैड दैट. बट एक्चुअली गाइस ऑन अ जेन्युइन नोट, इफ यू आर डूइंग अ मैस्कुलिन प्रोजेक्ट्स लाइक गियर्स हो गया, फैंटास्टिक के मतलब विंटेज लुक हो गए, mechanicals हो गए, वो सब black में will always look much better. So that is very easy also. So if you are starting off, you can always, go that way if you want to use black gessos. But I'm sure like Parvati has been doing it, so she can do this also with black. So I'll use moss effect base. This is Hmm. light green Right. and the other one is the same brown. So Okay. of course जो थोड़ा सा heaviness जो ऊपर है, I wanted to bring Hmm. it in the bottom also so that थोड़ा Perfect. ये लगे. Balance नहीं लगेगा. तो Hmm. बैलेंस नहीं रहेगा तो वो sometimes it doesn't look good. I don't know. I have not Right. tried it. But No, yes, no, I that's true. wanted to That's a bring that. design concept. Yeah. Yeah, yeah. Yes. So I wanted to bring that brown also. So Right. So again, that's a design concept which I don't think a lot of time we talk about when we are like recording our mixed media projects etc. Because हाँ, correct, what correct. happens Yeah, is हम लोग intuitively ही कर लेते हैं उसको और कर हम लेते बोलते हैं नहीं and है कि हम इसके लिए क्यों कर रहे हैं. क्यों So कर I think that's एग्जैक्टली a एंड good वी point. थिंक ये तो पता ही होगा. हाँ, that's a good point. मतलब वो वैसे भी अगर आप हर चीज को बताने बैठोगे तो मतलब it will become a live, no? Because it will एग्जैक्टली take so एग्जैक्टली. much time also. So yeah, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग लाइव राइट सो दैट exactly. जो चीजें अपन नहीं बता पाते हैं. हाँ. क्योंकि सो एट द एंड ऑफ द डे आप वीडियो 20 मिनट का बनाओगे ज्यादा से ज्यादा, उसमें आप कितना ही बोलोगे.
Nobody's watching 20 minutes video nowadays. हाँ मतलब सबको maximum I'm saying like as a सबको brand शॉर्ट्स owner चाहिए probably आजकल. I do हाँ I know अभी तो वो short content वो बेचारे long content वाला it's the I long know. content only thing that works is lives and podcast these days everybody wants to Podcasting. listen to Yeah, podcast yeah, yeah. True. Hi Nadia Hello, guys. So guys, I am gradienting those three colors hmm. like I want. ठीक है, तो वो कलर्स ब्लेंड कर करके till I'm happy with how things are looking, I'm just going about with it with the Right three colors that I mentioned: moss green, hmm. forest green, Forest and green chocolate and syrup. chocolate syrup right so basically a bright green moss green is like a earthy green and then brown is brown so we are creating that effect Oh, Parvati is using chalk pens, huh? Yeah. हाँ Okay. Parvati is Okay. using chocolates Okay. So now I'm using this light green hmm. moss effect paste. थोड़ा Hmm. थोड़ा. Actually, I could have used directly also, जैसे I made the mountains. हाँ इसको right भी कर सकते हैं. It's your choice. Like ये भी कर सकते हो. हाँ Because this ये this also will add an additional layer I feel layer. कि वो Yeah, आपको एक correct. गत्ते का लेयर Since मिलेगा anyways I'm using the shadow box, तो मेरे को right layers का टेंशन नहीं है. कब कितने भी कर सकते हैं. So hmm. uh, just to give some floral kind of effect, I'm going in Hmm. with yellow also. Lemon right drop drop is the yeah name, right? तो ऐसे थोड़ा hmm. फ्लोरल इफेक्ट आ जाएगा हाँ इससे. कि मतलब blooms है yellow blooms राइट. of flowers राइट. it is looking very pretty the yellow bloom वाला part और ये एकदम मस्त Pa ब्लेंड हो गया स्नेहा अभी मॉस yes, पार्वती का 10 minutes बाद देखो तो it is like what? ये तो नहीं दिख रहा था पहले. हाँ काले से शुरू हुआ और अभी एकदम गोरा गोरा होते जा रहा है Exactly. कलरफुल काफी स्प्रिंग बनते जा रहा है I like it. या I'll mute guys. थोड़ा सा I'll हाँ try this. ओके अभी you know because of the yellow it has become very springy अचानक से within a minute पार्वती Yeah, ultimately it'll all look like, वो green सीन green हाँ थीम. मेरा थोड़ा मिस्टिकल वैसे होगा. स्नेहाज इज मोर डे सीन. मेरा डे सीन हम्म प्रॉपर नहीं बनेगा, मेरा थोड़ा मिस्टिकल उसमें हाँ रहेगा. तो which I think is a black gesso look मतलब black gesso यस. में actually day बनाना बहुत difficult हो जाता है मतलब you will create like a night scene or a like a vintagey scene या फिर as you said mystical forest वाला scene हाँ, वैसा मेरा थोड़ा फॉरेस्ट वाला फील ही आएगा. हम्म So I'm ready to put my mushroom. ओके मशरूम डालेंगे एंड थोड़ा सा फ्लावर्स लीव्स उससे थोड़ा सा विल डेकोरेट अराउंड. सो कूल वो थोड़ा ऊपर और ले लोगे क्या वो एकदम नीचे का एज नहीं दिख रहा हाँ परफेक्ट या दिस गर्ल कैन गो लाइक दिस. तुम कौन एक्चुअली यू कौन कुड से यूज यूज मल्टीपल कर रही हो? फेरीज आल्सो
स्नेहा? वो सॉरी। मशरूम्स यूज कर रहे हैं दोनों, फेरी। और बैठी हुई फेरी यूज कर रहा है, लड़की जो थी ना, दिस विंग्स वाली, विंग्स हाँ वाली। हाँ, मेरा भी यही है। ये सबकी फेवरेट फेरी है, मेरी भी फेवरेट फेवरेट है। है। मुझे, मैंने नहीं यूज किया है, फिर भी मेरी फेवरेट है। बट एक्चुअली स्नेहा, आप लेफ्ट में भी वो खड़ी वाली फेरी भी डाल सकते हो, आपके पास जगह है ऑन द लेफ्ट साइड ऑल्सो, यस इफ यू यस। वांट टू लाइक एक्चुअली ऑन मेरा द एक बॉस वाला आई फील। एम एक यूजिंग और बोथ ऑफ आइडिया देम। है। हाँ। ये वाली और ये वाली, दोनों अच्छा। दोनों आई एम यूजिंग। परफेक्ट। ये सिंस ये देखो। हाँ। शैडो बॉक्स है तो मैं बहुत ही लिबर्टी लेने चाह रही थी। हाँ। सो व्हाट आई वांटेड टू डू इज, ये जो स्टेयर्स है राइट, हाँ। आई वांटेड टू एक्सटेंड इट लाइक दिस थोड़े से ओ नीचे। माय, सो अगर इंटरेस्टिंग। सो अगर ये हो तो आई विल ट्राई। मैंने करके रखा है, लेट्स सी। अच्छा। सो इट दैट डज अपना लुक वेरी फिर, नाइस। या सो उससे क्या होगा, थोड़ा सा अपने को ऐसा रास्ता भी मिल जाएगा, थोड़ा राइट। लोगों को इमेजिन करना आसान हो जाएगा। अरे बढ़िया बना रहे हो, बढ़िया। कॉन्सेप्ट आपके कहाँ से है? बढ़िया है। ये बहुत मस्त आइडिया था वो। सो लेट्स सी। मैं अभी, हाँ, मेरे दिमाग में वो जो है वो अभी अभी कोई कार्डबोर्ड फेंकने ही बनी वाला, मुझे लग रहा है ऐसे ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स तुम लोग दोनों आइडियाज दे रहे हो। हाँ आई नो, नहीं फेंकना ही क्यों है। हाँ, बट अभी मतलब वही सब हमारी तरह बन जाएंगे। जैसे चीजें तो। एग्जैक्टली सो। सो नीरजा, यू आर मेकिंग corrugated से पॉम पॉम हार्ट, ऑसम। बाद में ओह फोटो वाओ, भेजना हम लोग को, लाइक टैग अस, आई दिस वुड इज वांट न्यू। टू सी। And tag all three, all four of us, CrafTangles, Khyati on Insta whenever you share, and Sneha and Parvati. नाइस या। तो एक्चुअली वो हार्ट मस्त लगेगा, मतलब वो रेड और ब्राउन्स के साथ टिम करेक्ट। हॉल स्टाइल हो जाएगा एकदम। सो And guys, I know today's live is going to be a bit longer क्योंकि हम लोग, as we said, we are kind of trying in creating a 3D scene, and I think हम लोग ने काफी कुछ from the start दिखा रहे हैं, so that a lot of time, हमको क्वेश्चन मिलता है कौन से कलर्स उठाए, कैसे ब्लेंडिंग करें, क्या करें, so आज की लाइव में we are trying to answer all those things. So that is at, like, just a heads up, थोड़ा लाइव लंबा चलेगा. I can see we have already passed 1 hour mark. यस So, गाइस हाँ, प्लीज as बेयर विद अस। yeah. And if you want to learn like all those 3D scenes kind of a thing, then I hope you are enjoying it also. Um, so I am using these wooden elements, Right. and one is already, I've already heat embossed, so अच्छा. I'm just leaving it as such. ये Okay. मेरा एक्चुअली एक पुराना प्रोजेक्ट से मैंने उखाड़ के लाई हूँ। Right. Right. And Parvati's favorite job. yeah, and this is new, so I need to heat emboss. Yes, yes, I'll be yeah. using अच्छा, heat and bus. Okay. हाँ, तो इसमें मैं गोल्डन हीट सॉरी गोल्डन एम्बॉसिंग पाउडर यूज करूंगी। Cool. Cool. सो गाइस आई So, अब, स्टार्टेड यूजिंग दोस स्टेप्स जो मुझे करना चाह रही थी। और मैं 3D steps बनाते जा रही हूँ। ये सो मस्त लगता है यार ऐसे प्रोजेक्ट्स हाँ, ना। मतलब ये ये मुझे, और ये बहुत मुझे मस्त बहुत लगता ही सही लगा कि ऐसे स्टेप्स डालना, लाइक मैं नहीं सोच पाती है। ये थोड़ा सा ग्रेडेड ऐसा रखेंगे सो हाँ. दैट इट लुक्स लाइक कि यहाँ से जाना है। राइट. ऑल्सो इफ यू आर नोटिसिंग, उन्होंने पहले छोटे डाले और वो बड़े करते जा रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट लाइक अ 3D, राइट, कि आप अंदर करेक्ट जा रहे हो करेक्ट। कैसल के। या सो अगर आप 3D बना रहे हो तो आप ये सब चीजें सोचोगे, तो देन इट विल लुक इवन मोर रियलिस्टिक. I'll just show you what I'm doing. So I've राइट. added the ink, the embossing ink, and now I'm adding my gold embossing powder. I'm हम्म. using Lindy's embossing powder. ओयो ओयो ओयो। ओके. क्या हुआ? सॉरी गाइस, मेरी सीढ़ियाँ नहीं, गिर वो गई। थोड़ा, हाँ, वो 2 मिनट तो ड्राई होने में लगेगा बेचारों को. नहीं मैं चेक कर रही थी कि वो ठीक दिख रहा है क्या, और उतने में वो गिर गई। अच्छा, नहीं नहीं, अच्छा दिख रहा है, फ्रॉम द टॉप व्यू इट इज लुकिंग नाइस, क्योंकि मैं देख रही हूँ ना. हाँ हाँ ओके। मस्त लग रहा है यार।
So I'll add this one थोड़ा सा scattered. हाँ हाँ. Oh, सब and mute perfect नहीं myself. बनाना है. So Kavita is saying very creative, Sneha. And Thank Nija is you. saying CrafTangles lives के फैन भी तो है, हम कितना भी लंबा हम देख लेंगे. देख लेंगे. हाँ, nice. Thank you, Nija. तो लॉट ऑफ टाइम क्या होता है अपने लाइफ, मुझे लगता है लोग बाद में देखते हैं और फिर मतलब भर भर के हम्म. कमेंट्स में सवाल आते हैं. आते मतलब मेरे हाँ. लाइफ पे भी आया. तो फिर है ना, मुझे ऐसा करेक्ट करेक्ट. लगता है यार, इसीलिए मैंने इस बार है ना ये बारकोड वारकोड डाल दिया. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द सप्लाईज मोर ऑल्सो इन बिटवीन लाइफ, विच आई नॉर्मली डोंट डू, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यार प्रोजेक्ट समझे रहे हैं वैसा. बट आई यस. फील लोगों को, स्पेशली पीपल हु आर न्यू, दे वांट टू नो अबाउट इट. करेक्ट. मैं ना सो थोड़ा हियर यू आर सीमेंट यूजिंग. हाँ, सीमेंट मतलब आई वाज टेक्सचर गोइंग टू पेस्ट आस्क. सो दैट उसको थोड़ा सा ये मिले सपोर्ट, क्योंकि ना वो बार ओके. ये वाला थोड़ा पतला है आई थिंक, गिर रहा है. ओके. सो आई डोंट ओके. आई वांट वाज इट टू. गोइंग टू आस्क कि आप एग्जैक्टली मतलब क्या कर रहे हो. आई कुड सी सम टेक्सचर पेस्ट इन टेक्सचर पेस्ट तो अभी मैं सब देयर. पे लगा देती हूँ सो दैट अच्छा लगेगा थोड़ा सीख सके. हाँ, और एक वैसे भी टेक्सचर भी आ जाएगा, प्लस राइट. गिरने का डर नहीं है. राइट. एंड इट विल ड्राई लाइक सीमेंट पेस्ट है तो इट विल ड्राई लाइक अच्छे से हार्ड राइट. हाँ. आज मतलब नीरजा सिंह, आज तो दो दो प्रोजेक्ट है तो मजे ही मजे है. मतलब एक्चुअली मतलब टेक्निकली अगर हमारा लंबा लाइफ भी चला तो 1 hour ईच प्रोजेक्ट भी पकड़े तो भी मतलब. या. हाँ, यू आर सीइंग 2 projects साइमल्टेनियसली. I feel I should gold emboss this also, so I'll quickly do Yeah, I that. think gold emboss will look यस better. गो हाँ गोल्ड गोल्ड गोल्ड. मैं लिटरली बट बता ये रही हूँ पार स्टेप्स मैं. में एलिवेट कर दिया, लेकिन स्नेहा एकदम लुक दिस वन एलिवेट कर हाँ दिया. हाँ. ये हाँ. बहुत मतलब टाइम से मेरे दिमाग में चल रहा था, करूँ नहीं वेरी करूँ. क्रिएटिव आइडिया, वेरी क्रिएटिव आइडिया. थैंक यू. और 3D लिटरली मैं बना है तो पार्वती एकदम बता रही हूँ, हो रहा मेरा कुछ होता है और मैं बीच में देखने जाती हूँ पार्वती का कुछ बदल ही जाता है. है. ये मैं अभी दूसरी पार्वती बार के बोल रही अभी. हूँ पर मैं सच में हाँ. अमेज्ड हूँ. नहीं, लेकिन पार्वती का एक्चुअली वो भी है ना, शी एंजॉयज पुटिंग मोल्ड्स एंड हाँ MDF एंड हाँ. ऑल दैट. करेक्ट लाइक करेक्ट. उसका वो बहुत हेवी इलैबोरेट करती है हाँ प्रोजेक्ट्स हाँ. होते हैं. सो वो करेक्ट उसका करेक्ट. वहां पे ही उसका लुक वो लास्ट ½ hour में ही अमेजिंग होता है. क्योंकि शी यस. पुट सो मेनी एलिमेंट्स ना ऐसा. करेक्ट. मुझे ऐसा होता है कि मैं करती हूँ, लेकिन मेरे को ब्लैंक स्पेसेस भी, मतलब पर्सनली मेरा वो, मतलब मुझे ब्लैंक स्पेसेस भी अच्छा लगता है. और मुझे ऐसा अच्छे लगता है कि लगते हैं. वो मेरा स्ट्रेंथ हाँ. है कि मेरे को करेक्ट ब्लैंक स्पेसेस रखूँ तो बेटर होता है. बट शी समहाउ मैनेजेस इट विथ अ लॉट ऑफ एलिमेंट्स एंड इट लुक्स नाइस. सो करेक्ट. सबके और अपने मेरा अपने ना एरिया ऑफ वो आर्ट एक्सपर्टीज है. जर्नलिंग में आ जाता है बट नॉट विथ मिक्स हाँ. मीडिया. मिक्स मीडिया में मुझे ऐसा मिक्स लगता है मीडिया सब में भर मुझे दो. एक्चुअली आपका है ना एरिया ऑफ एक्सपर्टीज लगता है कि गत्तों को कैसे यूज करें. कि आई रिमेम्बर लास्ट वन आल्सो यू यूज्ड इट एज ब्रिक्स. एंड करेक्ट टुडे आई करेक्ट लाइक हाँ. द होल माउंटेन कॉन्सेप्ट एंड द होल ब्रिक वाला कॉन्सेप्ट. तो बहुत सही लगा मेरे को. मतलब गत्तों वाला आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, एज आई सेड इन नमिता's तरीका. यस. सो गाइस जब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है आई जैसो माय एलिमेंट्स. दिस इज ड्रैगन ओके. फ्लाई सो आई एम थिंकिंग ये आराम से इस पे इट कैन गो. इस पे तो अपन ओके. ने बंदी बिठा दी. हम्म. एंड लेट्स गो फॉर दिस वन. हम्म. I am starting to layer my elements, guys. ओके. अभी है ना पार्वती, आपको शायद थोड़ा जूम आउट या फिर थोड़ा बीच में लेना पड़ेगा, क्योंकि वो थोड़ा ठीक है. दिखने में दिक्कत होएगा. थोड़ा और राइट. ठीक है. और थोड़ा राइट. कॉर्नर नीचे का नहीं दिख रहा. हाँ. परफेक्ट. और थोड़ा नीचे, हल्का सा नीचे का डब्बा. हाँ. परफेक्ट. अभी पूरा दिख रहा. गाइस थैंक आई यू शुड हैव नाडिया. डन दिस बिफोरहैंड. हाँ. कोई नहीं. छोटा एलिमेंट है तो आई एम थिंकिंग होपफुली फटाफट हो जाएगा. हाँ. मैं सिर्फ जैसो कर रही हूँ गाइस. इफ आई एम नॉट
स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है तो I'm नहीं नहीं, just दिख रहा है, दिख रहा है। okay. दोनों का दिख रहा है। नहीं दिखेगा तो मैं बता दूंगी मेरा काम ही वो है। हाँ, क्योंकि आई एम लाइक टू मच इनटू दिस। या डोंट वरी, डोंट वरी। मैं ऐसे सब ऐसे मल्टीपल स्क्रीन्स मेरे चल रहे हैं और मैं देखी जा रही हूँ। बट मुझे फुल मजा आ रहा है, पता है, सब बालकनी वाली फीलिंग आ रही है। कि दो मूवीज नाइस। चल रहे हैं और मैं ऐसे, प्रोडक्शन हाउस वाले लोग होते हैं ना, कि थोड़ा हाँ, लेफ्ट करो, थोड़ा एंगल में डालो, थोड़ी लाइट बढ़ाओ, ऐसा, ऐसी फीलिंग आ रही है डायरेक्टर वाली। डायरेक्टर वाली, यस, नाइस। नाउ मेरे को थोड़ा डेप्थ चाहिए, सो डेप्थ के ओके। लिए आई हैव कट आउट दीज कार्डबोर्ड पीसेस, है ना? हम्म। तो इससे मैं मतलब अ, थोड़ा ऐसे लेयर कर करके इसको ऐसे थोड़ा हाइट हम्म। बनाऊंगी मेरे एलिमेंट्स के लिए। परफेक्ट। बाय द वे, अपने बच्चे के टॉय का डब्बा ले लिया तो सामने उसको क्या दिया, कुछ दिया कि नहीं? नहीं नहीं, उसको पता ही नहीं है अभी। ऑयल है। अब कैसे होगा फिर? बाद में वो बोलेगा मम्मी मेरे टॉय का ये ये डब्बा कहाँ ही गया? नहीं मिला। उसके पास इतने सारे टॉयज है, उसको ही आइडिया नहीं होगा कि क्या कहाँ गया। मुझे लगा ही था यही आने वाला है, कि उसको पता ही नहीं चलेगा, मैं ऐसे यूज कर लूंगी। और क्या। बट एक्चुअली ना, आई हैड, मतलब मेरे वो प्लानर के साथ डब्बा है ना, तो आई वाज थिंकिंग मैं इसका क्या करूंगी, एंड लुकिंग एट योर्स, दिस गिव मी अ गुड आइडिया, लाइक आई कैन ऑल्सो डू लाइक अ शैडो बॉक्स, ऐसा टाइम पास मस्त एक लाइव में। एक्चुअली शैडो बॉक्स का आइडिया वाज पार्वतीज, राइट? हाँ हाँ, मतलब हम लोग कैनवस करने वाले थे कैनवस से टिल टुडे एकदम मॉर्निंग। से शैडो बॉक्स इसमें, बट थैंक गॉड उसको आइडिया है। हाँ, it is looking very like, and both of them are looking very different. Like, trust me, I can see them side by side. या, मतलब वो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, यू कैन क्लियरली सी, बट वो इफेक्ट पूरा अलग है। so guys, I'm बिल्कुल using कविता, मैं डायरेक्टिंग lemon करूंगी अभी। tart. Sorry. ओके। मेरे को बोल रहे फेरी मूवी डायरेक्टर ख्याति। हाँ, ट्रू। Can I select my more cast also? Can I hire people? I need to hire some more good-looking guys also then. या, लो हाँ, वी देख लो। मिस गाइस, राइट? And can we hire some K-drama actors? Will the budget allow that? प्लीज हाँ, डू, मतलब प्लीज डू। नहीं, लेकिन उनको हायर करूंगी तो मुझे ऐसे लगेगा कि यार मैं बहुत अगली हूँ। तो छोड़ो। Their beauty standards वो are सब नहीं सोचना, amazing. वो सब सोचने हाँ का है ही नहीं। बस उनको हाँ, देखो, एंजॉय करो, खुश रहो। ट्रू ट्रू। एक्चुअली मतलब उन लोगों का ब्यूटी स्टैंडर्ड्स मैं देखती हूँ, मेरे को ऐसा लगता है यार, अगर मैं कोरिया में होती तो मैं तो पागल हो गई होती। नहीं नहीं, अपन तो पागल ही हो जाते हैं, मैं अपन खाना नहीं बहुत खा बुरा। पाती। नहीं नहीं, हाँ। दे आर वेरी पागल दैट वे, आई फील। No, but then looking at them, I mean, it या doesn't look like they are pagal. Like they are so thin. आई नो। तो हम लोग एक्चुअली मलेशिया गए थे, तभी हम लोग जेंटिंग गए थे, तो वहां पे वो बहुत बड़ा मॉल है, तो अप्रैली उसका डिस्क का ओपनिंग था, वहां पे बहुत बड़ा डिस्क है। सो ओके। उसके लिए कोई तो फेमस के पॉप बैंड आया था, मतलब स्टोरी हाँ। टाइम, ओके। थोड़ा मैंने बोला आज मैं अभी स्टोरी भी बताती हूँ ये। तो I mean, I did not know anything about K-pop or K-drama when we went in Malaysia. Okay, so this is like 4 5 years back, like four, I हम्म। pre-COVID. तो ओके। pre-COVID मुझे K-dramas पता ही नहीं था. I started it in COVID. एक्चुअली या, यू आर राइट, मुझे भी नहीं पता था। मुझे भी नहीं हाँ, पता था तब वो तक। फ्री टाइम एक ही देखा था probably मैंने लाइफ में एक्चुअली, मिला नहीं होगा ना कभी जिंदगी में इतना। यूएस में मैंने एक देखा है, मुझे उसका अच्छा नाम अच्छा। सीक्रेट लाइफ सीक्रेट समथिंग, गार्डन। सीक्रेट समथिंग लाइक गार्डन। दैट, जिसमें वो हाँ डाइटिशियन हाँ होती है उसकी, एंड ऑल, आई डोंट हाँ रिमेम्बर हाँ नाउ। हाँ हाँ, वो ये, यूनबिन वाला है वो हाँ क्रैश हाँ, लैंडिंग ऑन यू वाला हीरो है वो। ओके। अभी मैं एकदम प्रो हो के ड्रामा में। अभी तो मुझे पूछो, मेरे को तो नाम भी याद होते हैं एक्टर्स के कोई कोई। But like, I don't know if I'm pronouncing them correctly, but I do know them. Some of the names.
सो एनीवेज वो हम लोग गए थे, तो कोई तो के पॉप बैंड था, एंड लाइक इवन लाइक गौरव एंड लाइक few of us couples went. So we were thinking कि यार मतलब जाना चाहिए क्या? We had complimentary passes also because we were staying there in the hotel, वो जेंटिंग की होटल में. तो मैंने बोला यार क्या करने का इनका, मतलब अपने को कुछ लैंग्वेज भी समझ में नहीं आएगा एंड ऑल दैट, बट अ लॉट ऑफ पीपल हैड कम, लाइक अ लॉट ऑफ कोरियन, सिंगापुर के, फिर जापान की लड़कियां लड़के सब. And man, matlab, we were looked down upon the entire time when we were there, okay? Because they were so well dressed and they were like completely in makeup and so like मतलब हाँ, इतना हम गॉट इट, लोग गॉट शायद इट। अपनी शादियों में इतना वेल ड्रेस्ड और इतना ग्रूम्ड नहीं आते होंगे. हम्म। तो बाय द वे पार्वती, आपको थोड़ा मूव करना पड़ेगा राइट में, वापस थोड़ा हिल गया. हाँ, परफेक्ट. वाओ। तो 10 मिनट हो गए, स्नेहा बोलेगी बदल गया. बदल गया। तो ये देखो ना, ऐसा प्लास्टिक के वो स्टेम्स वगैरह यूज करे एकदम, मतलब ऐसे मेरे पास भी ग्रीनरी है ना, दिस इज गिविंग मी लाइक लुकिंग एट यू, मेरे को ऐसा लग रहा है यार मेरे पास भी ये पड़ा है, मैं भी यूज करूंगी. हाँ, मेरे पास ये सारे फिलर्स इतने टाइम से पड़े हुए हैं, तो हाँ टुडे आई थॉट कि आई शुड यू नो टेक देम यार, आउट, यूज इट. नो दिस इज नाइस. एंड आई रियली लाइक योर दैट आइडिया ऑल्सो कि अगर प्रोजेक्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं बना तो उसको निकाल के रीयूज करो. बहुत बार है ना हम लोग वो करते नहीं है. तो मुझे वो भी बहुत सही थॉट प्रोसेस लगा. मेरा से तो फिर मुझे ऐसा होता है कि यार मैंने यूज कर लिया तो फिर खत्म हो जाएगा, वो भी आ जाता है ना. हम्म। अंदर का वो आर्टिस्ट और वो सब जाग जाता है। अंदर का बनिया जाग जाता है. बनिया। as I say. हाँ, देखो ये मैं जो बनिया है, बोलना नहीं चाह रही दीज आर ऑल. थी। हाँ. नहीं, मैं बोल सकती हूँ ना, मैं वही कम्युनिटी में हूँ, तो आई कैन से गुज्जू बनिया बाय बाय. सॉरी पार्वती, प्लीज गो अहेड. नहीं, मैं ये बोल रही थी कि ये सारे ना मेरे ही पौधे जो सूख गए उसी के मैं ऐसे अच्छा. स्टोर करती रहती हूँ. या। तो दिस इज माय हाँ. तुलसी प्लांट. सो ओ. ओहो, तुलसी अच्छा. माता का तुम्हारे पर, यू आर ब्लेस्ड। हम्म. तो ये सारे या तो मैं रोड से उठाती हूँ या ऐसे मैं ये आई एक्चुअली नो, पता है लास्ट टाइम मैं भी तुमने करती जब वो हूँ। ब्रांचेस यूज करके बोला रोड से उठाती हूँ, मैं ना हम्म। तुम्हारा आज ही तुमको याद किया पार्वती, क्योंकि मैं चल के आ रही थी ना, मैं बोली साला मेरे यहाँ पे तो कोई ब्रांचेस ही नहीं मिलते रोड पे. तो मतलब मैं कहाँ से ढूंढूं. पार्वती बोलती मैं तो रोड से उठा लेती हूँ, मेरे तो रोड पे सिर्फ सीमेंट ही सीमेंट है. ओहो। हाँ, मैं भी करती हूँ ऐसे बहुत मतलब बार। बॉम्बे में से ट्रीज ऐसा, मतलब इट्स अ लिबर्टी. तो अभी मैं पप्पा वही मेरे डैड सुबह जाते हैं ना वॉक पे, तो मैं हाँ, अभी हाँ, हाँ। उनको, मेरे दिमाग में ना लिटरली आज सुबह ही चल रहा था, मैंने बोला मैं एक काम करूंगी, फिर मैं डैड को बोलूंगी आप वॉक पे जाओगे ना तो नीचे ब्रांचेस गिरते हैं, क्योंकि उधर बहुत सारे ट्रीज है गार्डन में, वॉकिंग वाले गार्डन में. तो ओके, मैं हाँ। उनको बोलूंगी कि आप सुबह ले आना मेरे लिए, या फिर मैं गौरव जाएगा वॉक पे तो उसको बोलूंगी, मतलब ऐसे, क्योंकि मेरे को ये ऐसे ही फेरी वाला मुझे मॉस के साथ बनाना मेरा प्लान है, तो मैं उसके लिए सोच रही थी कि मुझे क्या क्या चीजें चाहिए. तो हम्म। मतलब वो सब है ना मेरे के दिमाग में ऐसे, मतलब पहले से इकट्ठा करना, कचरा कहाँ से इकट्ठा करो वो सब चल रहा है. पर मैं भी करती हूँ उसमें मैं चलते अपने फिरते पापा अगर। और गौरव सबको काम पे लगा दूंगी. और ऐसे ब्रांच वाला हो तो कितना सुंदर दिखता है ना, लाइक द पार्वती राइट, इज यूजिंग। मतलब वो एकदम ऐसा. कितना हाँ, सुंदर मतलब आई लगता एम है। लाइकिंग योर ऑल्सो हाउ यू हैव एडेड द लीव्स एंड द फ्लावर्स टू पहले थोड़ा एम्प्टी लग रहा था, एम्प्टी था, अभी हाँ, तुमने हाँ। सब फिलर्स चालू किए तो प्रॉपर सीन बन रहा है कि नीचे मशरूम्स पड़े, ऊपर तुम्हारे स्टेयर्स बने हैं, तो यस। कैसल आ रहा है और ऊपर माउंटेन्स है. और पार्वती का अलग मिक्स मीडिया टाइप लुक है उनका. तुम्हारा बहुत 3D हो गया. किसका? मेरा। तुम्हारा तुम्हारा मेरा, ऐसा ओके। 3D हो गया एकदम ऐसा, हाँ, हाँ, क्योंकि हाँ। स्टेयर्स के कारण प्राइमरीली, और उनका ऑफ कोर्स शैडो बॉक्स है, बट हर्ड इज मोर ऑफ अ फैंटेसी एज शी सेड, नो, उसका बहुत फैंटेसी करेक्ट, वाला लग करेक्ट, रहा यस। सो आई यूज द ड्रैगन फ्लाई, मैंने इसको लिक्विड वाटर कलर से किया है। सो है. हाँ. आराम से यू कैन यूज ऑन मोल्ड्स ऑल्सो। राइट. राइट.
बाद में रिकॉर्डिंग देखने में मजा नहीं आता है नीचे से when it's on we can interact हाँ absolutely free to comment. I am happy to, I mean, always answer and see comments. It makes life more fun according to me. So करेक्ट. please do that. मशरूम्स मस्त लग रहे हैं. मशरूम्स मस्त लग रहे हैं. मशरूम्स की एक्चुअली सुप्रिया की बहुत डिमांड थी. सो आई रिमेम्बर दिस ट्रांसफर a lot of people had asked for mushrooms क्योंकि जर्नलिंग में बड़ा यूज कर सकते हो. So that करेक्ट. is why we did this. And like I think people have liked it. So I want to do something like this in stickers also. Let's see. मेरे दिमाग में है. सो गाइस, मैं एक सीक्रेट बताती हूँ. मैं ना आर्ट जर्नलिंग करना चाह रही थी, इससे ये दोनों ने मुझे मिक्स Hmm. मीडिया करवाया. But यार मेरे दिमाग में 3D का ही कीड़ा चल रहा था द मोमेंट आई सॉ दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर. तो आई वांटेड कि 3D ही बने इसमें. स्नेहा जब भी स्टिकर आएंगे तब तुम आर्ट जर्नलिंग में स्टिकर यूज करके बनाना. ठीक है. ठीक है कि नॉट. आएगा क्योंकि आई थिंक पीपल आर लाइकिंग दिस फेरी वाला अ लॉट. आई एम लविंग और इट बाय बाय द द वे. वे आएगा और भी शायद फेरी आएंगे अगले में भी. मुझे लगा आई डोंट रिमेम्बर बट शायद है अगले रिलीज में भी. प्लीज डू ब्रिंग. हमारे पास ये फैंटेसी टाइप के बहुत कम है, तो कम इट है बी अ या. राइट. वेरी गुड एडिशन. हाँ हमने 2 दिन पहले ही इस पे 1 घंटा चर्चा की थी फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो. तो बट यस यस आई डेफिनेटली लाइक देयर आर कपल ऑफ थिंग्स बट फेरी तो मुझे लग रहा है क्योंकि अ, हम लोग के ऑलरेडी अगले लॉट के भी काफी डिजाइनिंग हो गया. So I think fairies are there and a lot of like fantasy, but good, like not the cartoony type as you had said, Parvati. वो भी आ रहे हैं. तो next time journaling में बड़ा मजा आएगा. Like this time it यस. was more of a 3D scenery kind of transfers. Next time we have done more of a journaling kind of a नेक्स्ट transfer. टाइम वी शुड डू जर्नलिंग Yeah. साइड बाय साइड. हाँ, that also we can do. Like मैं मेरे को ना एक्चुअली वो भी था कि one time we'll do rust and patina. And we या. will do like on a black gesso and white gesso also. So that will also, and like elements आप अपने हिसाब से decide करो. So हाँ like हाँ. Parvati, she wants to do dark gesso, she can go mechanical. If you want to do spring, you can go spring. But we will like decide on showcasing कि हम patina या moss या rust को लेके करेंगे. So that will be very fun, I think. सो गाइस, काफी कुछ इट हैज कम Hmm. टुगेदर. I'll Hmm. color this with moss so Okay. that अचानक एकदम से white ना दिखे. हाँ. एंड ऊपर आपको शायद थोड़ा येलो अभी थोड़ा टोन डाउन हो गया मुझे लग रहा है. ये ना. कैसल हाँ. के पीछे ना. या हाँ तो इफ यू विल वांट डू टू इट. ऐड लाइक करेक्ट फ्रॉम करेक्ट. मेरे को लग रहा है नहीं नहीं, हुआ है, थोड़ा सा हो गया. हुआ है ना. या. पार्वती अगर तुम कुछ बोल रहे हो तो हम शायद मिस कर रहे हो क्योंकि आप साइलेंट पे हो तो आई डोंट नो. नहीं, आई एम लॉस्ट इन माय. अच्छा. वही मुझे लगा ही क्योंकि मैं इतना कमेंट मार रही हूँ कि हम रस्ट को ब्लैक और इस पे करेंगे और कोई मतलब स्नेहा का रिस्पॉन्स आया लेकिन पार्वती से गायब. मुझे लगा सुना नहीं या देखा नहीं नहीं है नहीं, क्या हो सुन रही गया. हूँ. सुन रही हूँ, बट मेरा दिमाग पूरा इसमें चल रहा ध्यान है अभी कि उसमें चल रहा है. हाँ, कि कहाँ क्या हाँ. लगाऊं मैं, क्या लगाऊं मैं. राइट. नो हैपेंस मेरे को तो ऐसा कभी कभी हो जाता है कि व्हाइल आई एम मेकिंग एंड आई एम रिप्लाइंग टू पीपल ना ड्यूरिंग माय लाइफ तो मुझे ऐसा लगता है कभी मैं कुछ नॉनसेंस ना बोल जाऊं क्योंकि मेरा दिमाग इतना प्रोजेक्ट बनाने में होता है ना कि करेक्ट. यू आर लाइक टू थिंग्स कभी कभी नहीं हो पाता है स्पेशली वेयर बोथ यू हैव टू यूज योर वन साइड ऑफ ब्रेन और लेफ्ट साइड राइट साइड आई डोंट नो व्हाट बट या. ट्रू. तो ऐसा हो जाता है कभी कभी फिर मुझे रियलाइज होता है अरे मैंने क्या बोल दिया लाइव में एंड देन आई रियलाइज के आई वेंट विद द फ्लो. बाप रे, मैं तो देखती ही नहीं मेरा लाइव वापस. मुझे मेरी आवाज ही नहीं अच्छी लगती. मेरे को भी नहीं अच्छी लगती मेरी आवाज. हाँ, मुझे सेम जैसा. हियर. मुझे मुझे कई बार लगता है कि यार क्या गंदा कितना गंदा बोलती हूँ क्या मैं. और मुझे जैसा मुझे सुनाई देता है ना कि मैं कैसे बोलती हूँ, वो वैसा बिल्कुल भी हम्म. नहीं है. हाँ, सेम हियर. राइट. सेम. मेरा भी वही होता आई फील माई वॉइस साउंड्स वेरी श्रिली व्हेन आई एम लाइक somebody else is listening to it but मुझे यहाँ पे तो मेरा वॉइस नॉर्मल लगता है.
मेरे को गौरव होता है बहुत धीरे से बोल, तू श्रिल होते जा रही है, बट आई एम लाइक, मतलब आई मेरे को तो नॉर्मल लग रहा है। तो बट हाँ, नहीं मेरे साथ एक्चुअली श्रिल हो जाता है मुझे वॉइस। नहीं लगती आपकी आवाज ऐसी। अब पता नहीं, इसीलिए वो मेरे को बहुत कॉन्शियसली बोलता है कि ना टॉक सॉफ्टली। तो अभी मैं देखो ऐसा अचानक से सॉफ्ट हो गई हूँ कि आई गेट दैट अलॉट। Thank you, Shalu. So Shalu is saying both projects are looking amazing, and actually, both of them are looking very different. And I am really enjoying the use of your teal color, Sneha. वो actually mushrooms के साथ बहुत सही blend हो गया है। सही ब्लेंड हो पहले गया है। मुझे ऐसा आउट ऑफ द प्लेस लग रहा था, बट अभी वो हम्म। मशरूम और सीन आने के बाद नीचे करेक्ट परफेक्ट करेक्ट। ब्लेंडिंग हो गया है। मतलब आपने सोचा होगा, मेरे को आइडिया नहीं था कि आप क्या या सोच रहे बिकॉज हो, तो इसमें ऑलरेडी ग्रीन येलो हाँ। ऑरेंज ये था ना, तो मेरे दिमाग में बैठ गया हाँ, था कि आई हैव टू बी ऑन दिस नहीं, दैट वाला। हैज कम आउट वेरी वेरी नाइस, मतलब बहुत सही हो गया। थैंक यू। और पार्वती का तो फुल ऐसा सीन बन गया है कि वो जैसे एक्वेरियम में कैसे लोग अपना एक्वेरियम को सजाते हैं ना, वैसा हो गया। हाँ 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 एक्चुअली ट्रू ट्रू। है ना, तो ऐसा ही होता है ना एक्वेरियम का। एब्सोल्युटली नहीं जी, हम लोग एक्चुअली, मतलब आई फील थोड़ा सा के ड्रामा वेदर ऐसा थोड़ा डाल लेना चाहिए, वरना लोग बोलेंगे कितना मिक्स मीडिया पे, मतलब आई कैन टॉक फॉर आवर्स बट आई फील पीपल विल गेट बोर्ड के कितना मिक्स मीडिया के बारे में बोलेंगे हम लोग। एंड वी हैव टोल्ड पार्वती के अच्छा बना है, बट शी इज सो लॉस्ट दैट शी हैज नॉट रियलाइज्ड इट आल्सो। Thank you, thank you. Because literally Ninja is also saying the same thing. Paru, मतलब Paru is so involved. ऐसा हो गया उसका। Sorry, वो Kavita is धड़ाधड़ saying that एलिमेंट Parvati is चिपकाती जा रही है। हाँ, मतलब उसके दिमाग में अभी आ गया है, वो दिमाग में छप गया है कि हाँ ऐसे उसके सीन बन उसने रहा है, और सोच वो लिया है। डलते जा रहा है। हाँ, इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी, बोथ ऑफ बाय यू, द वे मतलब गाइस, बहुत ही अगर अलग एंड ऐसा ब्यूटीफुल। कुछ स्टेप्स बनाने हैं ना तो पहले कलर कर लेना, मुझे कलर बहुत कर मुश्किल हो लेना, रही हाँ। हाँ, एक्चुअली पहले कलर कर लेना, अभी थोड़ा फाइट हो रहा होगा, श्योर। फाइट है, बट ठीक है। आई एम स्टिल मैनेज हो रहा है, बट या हाँ। फॉर मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इफ एट ऑल हाँ। ऐसा करना चाहते हो। हाँ, learn from our mistakes. So, नीरजा इज सेइंग टिंकरबेल की याद आ गई वो पारो वाला आई नो देख के। सो एक्चुअली वो लड़की क्यूट, बहुत या टिंकरबेल जैसी है। हाँ, वो करेक्ट गर्ल, करेक्ट। दैट गर्ल इज वेरी क्यूट। मेरा भी जब से बना है ना, मुझे ऐसा है कि मुझे उसको, और मैं जर्नलिंग में यूज करने का सोच रही हूँ, बट नाउ दैट आई आल्सो वांट टू मेक अ 3D, आई विल आल्सो प्रोबेबली यूज दोस टू फेरीज, वो एक खड़े वाला और एक बैठे वाला, और फिर तीसरी वाली उसको मैं डायरी में यूज करूँ। हम्म। इसलिए मैंने ना फेरीज भी हमने ज्यादा दी है, क्योंकि हमको या था कि लोग ऐसा ज्यादा यूज कर पाए। अच्छा है, पर ये मेरे वाला को पेज इज हल्का सा वेरी नाइस। यहाँ पे हम्म। वो ब्रिक थोड़ा उभर के दिखाना है. नाउ माय हाँ। पेंट्स हैव dried, so हम्म। I'll dry brush some red there ओके। so that my bricks show through. राइट। So and that red will also tie up to your red berries that you have just added, right? So Yes. you are kind of repeating your red also Yes. in the project. I'll slightly mix it with the chocolate syrup because the red that I'm using here, right? This is Ruby ruby red. red, which is Yeah. like very bright. Yeah. तो मेरे को इतना bright नहीं चाहिए. तो I'll slightly mix it with this thing, Brown the to make it more brown. earthy. हाँ, Right. तो chocolate syrup, the Mm. same chalk pen that I used earlier. Yeah. So Nadia is saying both the projects are looking very beautiful, and trust me, actually, मतलब दोनों 3D है, but दोनों का look बहुत अलग है। मतलब hers is more scenic, Sneha's is more scenic, and yours is more fantasy aquarium, वैसा वो पूरा setup होता है ना 3D बॉक्स का वैसा। करेक्ट या। So आई और मतलब इसका मजा ना, आ गया मुझे देख के, एक ट्रांसफर इन मल्टीपल वेज। इसका जो कैसल है ना, इट एक्चुअली लुक्स हाँ। फार अवे है, राइट। हाँ, थोड़ा ऐसा दूर पीछे है है, कहीं। राइट। हाँ तुम्हारा भी ऐसा लग रहा है, व्हेन वी आर लुकिंग फ्रॉम द लग रहा है। लाइक द मशरूम्स मुझे में भी पर्सपेक्टिव, वो इसमें पीछे नहीं है। लग रहा, मुझे डायरेक्ट नहीं, ऐसे मेरे को देख रही ऊपर हूँ। से लग रहा है, ऊपर से ओके। लग रहा है। हाँ,
तुम्हारा एक्चुअली वो थोड़ा ब्राउन और ब्लेंड हो जाएगा ना माउंटेन्स, तो हम्म। थोड़ा और बेटर हो जाएगा। वो येलो मुझे ऐसा थोड़ा यहाँ पे कम लग रहा है, बट कैसल हाँ, तुम्हारा भी मैं अंदर लग रहा है। उसको कर रही हूँ अभी फिर से एक बार, हाँ, सो दैट। तुम्हारा एक्चुअली वो नीचे से परफेक्ट है कि वो फेरी के पर्सपेक्टिव से कैसल अंदर या है और ऐसा बीच में है सा। एक्चुअली वो। हाँ, हाँ, सो तो इट वो विल सही लग रहा है। प्रेजेंट। हम्म। सो हाँ, वो देखो, अभी अभी यू आर सीइंग द पर्सपेक्टिव, राइट? करेक्ट, करेक्ट, या। सो सो यार, यार मेरे को तो, मैं जेन्युइनली बोलती हूँ वी शुड डू दिस मोर ऑफन, आई एम मोर, एंजॉयिंग या इट। आई वुड लव टू। मुझे या, Yeah, yeah, same here. See, I responded this time. या। या, यू आर विथ एंड अस। ऐसा मतलब मजा आ रहा है, ऐसा पूरा लाइव ऐसा। और ऐसा ना मेरे को अच्छा लेआउट नहीं मिल रहा एक्चुअली, वरना ऐसा 3 लोग के लिए भी परफेक्ट स्क्रीन स्पेस होता ना, तो मैं भी बना लेती, लाइक हाउ निंजा इज मेकिंग इट विथ यू। आई वुड हैव आल्सो मेड, बट फिर मुझे चैट भी देखना है, रिप्लाई भी करना है, तो आई एम फीलिंग लेफ्ट आउट एक्चुअली। बिल्कुल भी नहीं है। Next, अरे बिल्कुल मतलब मत सोचो। नॉट इन टॉक्स, नॉट इन टॉक्स, बट मेकिंग अ प्रोजेक्ट। ते नीरजा बाद में टैग असा। हाँ, आई वांट टू सी द corrugated heart. या। So see, Kavita has a question. Sneha and Parvati, how do you both think of such beautiful ideas? And she is a fan of both of you. That Oh, goes without saying, Kavita. Thank you as always, to थैंक। join from the start and staying till the end of the या seriously, live. या शी वो इज एक लाइक फुल ऑन सपोर्ट, हमेशा हाँ, रहती है। या। very enthusiastic about, ट्रू, and ट्रू। like even if though she is not doing that particular art form, still she या wants to learn and ask questions. That's a really ट्रू। great thing as an artist. एंड तो इट फील्स आप लाइक ऐसे शी इज ब्यूटीफुल एंजॉयिंग आइडियाज, इट। या आप ऐसे ब्यूटीफुल आइडियाज सोचते कैसे हो? बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसफर शीट हम लोग को मिल जाती है तो फिर हम कर लेते हैं। नहीं, मैं ऐसे ना, मैं अपने अंदर के इनर जर्नलिस्ट या पॉडकास्ट होस्ट को जिंदा कर रही हूँ कि आपको जिंदगी। ऐसे ऐसे अभी मैं भी थोड़े ऐसे सवाल पूछूंगी, डीप सवाल, कि आपने क्या सोचा, मैं कैसे इसको ऐसे 3D सीन बनाऊं, वैसा सब। रणवीर इलाहाबादी। हाँ, आई वाज गोइंग टू से, बट आई वाज लाइक छोड़ जा रहे थे, लोग बोलेंगे क्या। मैं ये अंदर से मेरे कौन है ये? रणबीर अलावादिया, मेरे अंदर वाले को मैं जागरूक करती हूँ। So Supriya says very beautiful, and थैंक यू, थैंक यू। like she has commented on my saying कि यार मुझे मिस हो गया ना मेरा। ओके, ख्याति की आवाज चली गई आई हाँ थिंक। नहीं अभी आ रही। आई, हाँ, मेरा वो वापस बोट का नाटक चालू हो गया है। ये 1.5 घंटा होते ही अच्छा, ओके, ओके। वो उसका टाइमर लिमिट है, वो बोलता है बस अभी कितना बहुत बोलोगे बातें लाइव में। कर ली। पांडा को मिक्स मीडिया में यूज करने का आइडिया दे दो कोई। ओके, ओके। गो फॉर कुंफू पांडा थीम। हाँ, हाँ नीरजा चेक आउट, ये मेरा पेंगुइन्स है, बट यू कैन यूज लाइक, आई एम अज्यूमिंग तुम्हारे भी क्यूट पांडाज होंगे, तो हमारा जो फ्री स्क्रैप बुकिंग वैलेंटाइन एल्बम है उसमें मैंने पेंगुइन्स यूज किया है। यू कैन यूज द सेम कॉन्सेप्ट फॉर पांडाज ऑल्सो, एंड इट इज अ वेरी मिक्स मीडिया काइंड ऑफ अ स्क्रैप बुकिंग एल्बम दैट आई एम ऑडिबल, आई एम नॉट श्योर। वो मेरा, या यू आर। बीच में कट ओके। रहा है एक्चुअली। हाँ, वो मेरे को, क्योंकि वो बोल रहा है आवाज, वो ऐसे कर रहा है, इसके लिए बैटरी लो होने वाला है इसका। So you can use that, check out our Valentine's scrapbook album on our free course website. So check out our course website, you will find that it's like it has a lot of mixed media kind of a layout. So you can use the same concept for pandas also. Thank you, Neeta. So Neeta तो is मैं saying both are our favorite. Honestly, like both are very different to be honest. मतलब ऐसा favorites, आज हम favorites नहीं play कर सकते क्योंकि दोनों का conceptually बहुत अलग है.
तो थैंक यू मैं गाइस, आई नो जो जितने भी लोग एंड आए हैं कमेंट कर रहे हैं, एंड इट दे आर मीन्स अ स्टिल हाँ. लॉट हियर. टू अस. Yeah, and Yeah, they're I still mean it's here. almost 1 hour 45 minutes. आई नो. We are almost done. Yeah. या सेम हियर, ऑलमोस्ट Yeah. डन. मेरे को बहुत ज्यादा मन कर रहा है स्टैम्प्स यूज करने का. नहीं नहीं लेकिन कंट्रोल. रोक लो मुझे, कोई रोक लो. रोक दिया, मत करो. So Suprita is saying Paro and Sneha, both of you are seriously super talented and super inspiring. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. Thank you so much. मेरे को तो तुमने आइडिया दे दिया और ब्रिक वाले में तो हर लाइफ में कुछ ना कुछ सीखने मिलता है बताए मतलब मैं हर बार ही बोलती भी हूँ कि मुझे क्या आज सीखने मिला. तो आज का मेरा वो 3D यस. ब्रिक वाला बहुत सीखने मिला. ब्रेक. एंड यस, आई ये वो रियली लाइक. लास्ट टाइम भी मैंने वो विंडो वाला बनाया था. उसमें भी आई हैड यूज्ड अ पॉट ओवर इट, राइट? उसको ऐसा एक राइट ब्रिक राइट ऐसा. राइट हाँ उसके तो ऊपर वो पॉट्स वाला भी रखे थे. बहुत हाँ, यू लाइक्ड इट. अब बना ही लो आप. या मुझे ना एक्चुअली 3D बड़े अच्छे लगते हैं क्योंकि है ना मैं हाँ. 3D ज्यादा बनाती नहीं हूँ ना तो मुझे देख के मतलब ऐसा अरे हाँ यार मतलब कार्डबोर्ड जैसी चीजों को यूज करके सच अ यस. फन वे. And I really liked Parvati mein her use of those plastic leaves and all that. Because I have a lot of it, but I never think of doing what थिंक she's ऑफ doing. डूइंग, हाँ, ट्रू ट्रू. Yeah. So this is a आपस में एक दूसरे से हम सीख रहे हैं. कि मैं ऐसे सोचती हूँ प्लास्टिक कैसा लगेगा विद पेपर तो इफ आई डू इट आई स्टिक टू पेपर्स और आई स्टिक टू मोल्ड्स लाइक आई डोंट मिक्स वैसा. So I really like how she has mixed everything. हाँ अभी मस्त हो गया पर सो आई एम नॉट श्योर येलो क्यों यहाँ से गायब हो रहा है हर बार. आई थिंक सो इट्स ओके. हाँ वो शायद थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड लगा लो. या. So, Paro, there's a question for you. How mushroom you used it here? How did you make it so 3D? I think So it's I 3D, yeah. Hmm. मैंने वो दिखाया था, हाँ लाइक. गत्ते के टुकड़े यूज करके. हाँ, राइट. सो यू कैन यूज एनीथिंग, लाइक अभी मैंने तो गत्ते के टुकड़े यूज किया है. हम्म. यू कैन गो विथ दिस चिपबोर्ड काइंड ऑफ स्टफ ऑल्सो. ये भी मैं ऐसे छोटा छोटा काट के रखती हूँ, जो चिपबोर्ड हम्म. शीट होता है ना, उससे भी राइट. यू कैन डू इट. और कार्डबोर्ड्स आर हम्म. इजी एंड. अवेलेबल विथ एवरीवन राइट. रीयूज भी हो जाता है. हाँ, राइट. तो मोस्टली कार्डबोर्ड्स, आई थिंक दे गो प्रिटी वेल. हाँ. Actually, both of them have used cardboards. The या thing is, लेयर्स करने के लिए. Sneha has used, I think, 3 layers behind her fairy and mushrooms, and Parvati has used like 5, 6 layers. तो उनका और आगे है क्योंकि her shadow box is comparatively more deeper. So राइट. वैसा इसके लिए. So it again depends आपको कितना deep करना है, but of course you can use such kind of chipboard pieces या गत्ते के टुकड़े. मशरूम. ख्याति, योर वॉइस नहीं सुनाई दिया कट ओके. मुझे. गया. अभी आया. यस. हाँ, अभी आया. ओके. सो मशरूम सिलिकॉन मोल्ड्स. मेरे को मतलब हाँ यार जिस दिन मैं सिलिकॉन मोल्ड्स बना पाई ना मैं सब कुछ निकालूंगी. मुझे इतने पसंद है सिलिकॉन मोल्ड्स. एंड आई नो लाइक स्नेहा पार्वती एंड वी हैव अगेन Oh, वी हैव लॉट ऑफ we मिक्स love मीडिया it. कस्टमर बेस. सो आई एम श्योर इट विल वर्क. बट या मतलब सोच में सब है. होपफुली चलेगा क्योंकि मेरा और पार्वती का आई थिंक 2-3 वीक पहले ही सिलिकॉन मोल्ड्स पे बात हुआ था. हमारे हमारे. ऐसा मुझे लगता है डिस्कशन होते रहते हैं ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट. हम्म. True. या. So guys, I'm almost done. I think ओके पार्वती का ग्रेट भी हो सबका गया हो गया. ऑलमोस्ट, राइट? हाँ या हाँ या हो आई एम गया. ऑल्सो डन.
सो माइन इज मोर वो मिस्टिकल टाइप, तो मैं इसलिए थोड़ा हाँ, सा और वो स्टार्स एंड वो पेबल्स काइंड चीजें ऐड कर रही हूँ। राइट। वाओ स्नेहा, आप ऐसे खड़े पार्वती। होके दिखा सकते हो ना थोड़ा, तो आपके वो स्टेयर्स वाला लुक आई थिंक पीपल को तभी समझेगा। हाँ, सो गाइज नाउ यू सी हर स्टेप वाला लुक। फॉर दोज ऑफ यू कुड नॉट अंडरस्टैंड लाइक 3D पर्सपेक्टिव, क्योंकि एक्चुअली अब पार्वती का वो दिस इज क्लियरली समझ रहा है बिकॉज ऑफ द हाइट, आपका नहीं समझ रहा था। हाँ, सो करेक्ट नाउ यू करेक्ट। कैन सी हर होल 3D लुक। सो इट्स लाइक स्टेप्स हैं एंड इट्स जॉइनिंग लाइक हियर। राइट। Do you guys know of any 3D, like, sorry, any silicone mushroom molds, guys, between both of you? I जूरी के think पास है। Stampedia में था. आई थिंक अच्छा, प्रीमा ऑल्सो गॉट इट ना। उन्होंने एक मशरूम वाला छो, जो निकाला है। वो छोटे वाले हैं बहुत शायद। छोटा है बट वो इट्स वेरी हाँ, स्मॉल। हाँ, 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 एंड हाँ, I जूरी think वो हैज फ्रैंक बट गार्सिया दे आर वाला वेरी बिग। कलेक्शन का है शायद. हाँ हाँ या फ्रैंक फ्रैंक गार्सिया वाला या वो कलेक्शन। थ्री गर्ल्स क्या है वो, थ्री विच गर्ल्स का है क्या वो? जिसमें जया और ये हाँ हाँ, तीनों हैं। नहीं आई क्योंकि वो, थिंक इट इज फ्रैंक। नहीं है, अच्छा, ओके, नहीं आई मुझे थिंक ऐसा सो। लग रहा था। आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो। या सेम हियर, हम्म, आई कुड बी रॉन्ग। हम्म. बट आई थिंक हाँ, ये स्टैम्पीडिया में था, वुडलैंड, मतलब वो उसके कलेक्शन में. But वो स्टैम्पिडिया का सब मतलब, see guys, again, mold especially because we have had this issue with Prima also. For pre-orders also we get this कि molds है ना, they get discontinued very quickly once the lot is done. So अगर if you are looking, ख्याति, वी लॉस्ट यू अगेन। yeah, yeah. So if you are looking for molds, वो अभी चालू हो गया उसका. So if you're looking for molds, make sure कि जैसे ही रिलीज होता है you buy it out. क्योंकि अभी फिनाबेर और प्रीमा में भी वो होने लगा है कि they are phasing out molds. So I was just looking when we were looking for the new stock which is going to come. तो उसमें काफी सारी जो अभी लास्ट रिलीज ही किया है वो लोग ने बंद कर दिया. So molds especially guys, अगर कोई पसंद आ रहा है तो ले लो. From a normal artist perspective, I am saying again, I'm not saying from a seller's perspective. So please don't think like that. I am highlighting my, mold pieces and other things using our gold texture paste, Cool. like वो जैसे वैक्स टाइप वैक्स यूज से कर रही हूँ। करते हैं. हाँ, हम्म, तो इसका ड्राई ब्रशिंग कर रही हूँ मैं हम्म. टू मेक इट ऑल यूनिफॉर्म। हम भी है. So, like, I don't know, like all three of us are podcast fans, I feel. मतलब Beer Biceps है, निखिल कामत है. There are a lot of, like, I like a lot of podcasts. या मैं भी देखती रहती हूँ, अच्छा लगता है मुझे। हम्म. काम मतलब वो करते साइड करते थोड़ा में अच्छा चलता रहता सीखने है एंड मिलता है. देन वी कैन, हाँ हाँ एग्जैक्टली। Yeah. I watch whatever my husband watches. So अच्छा, I many a times I don't even know that they are podcasts. Later I find अच्छा. out. बढ़िया है. So लोड I ही नहीं sit and लिया है watch इसने लाइफ whatever. में। Yeah. उल्टा सुप्रीता मैं, में. सो आई हैव पुट Yes. दिस इन द बॉक्स। या अभी अभी मतलब आई फील नाउ इट विल पिक्चर्स के साथ पीपल विल बी एबल टू सी बट वो जब आपने खड़ा किया था ना तभी बहुत सही समझ में आ रहा था. हम्म. टिल्ट करके. या. Yeah, या. I am done. आपको भी ऑसम, थोड़ा जूम आउट करना पड़ेगा पार्वती. गुड जॉब I think पार्वती, some यू हैव डन अ white। लॉट इतनी कम देर में। हाँ हाँ, यार, यू हैव ब्लैक एडेड जैसा वो लॉट थोड़ा ऑफ सही होता एलिमेंट्स. है। वो लास्ट में हाँ. ही वो कलर्स और वो सब आ जाता है। इनिशियली तो आपको ब्लैक ब्लैक ही दिखेगा सब। पर नहीं, बहुत लेकिन सुंदर दोनों दिख रहा सही है। है, ट्रस्ट मी. मतलब वो व्हाइट का इफेक्ट और ब्लैक का इफेक्ट बहुत सुंदर है, लाइक बहुत, मतलब एलिमेंट सेम दिख रहे हैं बट लुक बहुत अलग है दोनों का.
ये फेरी कितनी प्यारी थैंक लग यू रही सो है। मच। अभी ऐसा स्नेहा मेरे को थोड़ा तुम्हारा भी दोनों बहुत ऐसा सुंदर है यार। जूम इन एक के बाद एक दिखा दो, पहले एक जन दिखाओ फिर दूसरा जन दिखाओ। स्नेहा, मे बी यू कैन गो फर्स्ट। या सो जस्ट लेट मी सी इफ आई कैन डू अ बेटर ये लेआउट। नहीं छोड़ो, यही बेटर है। हाँ, लवली। अभी So there's this mountain, sky, castle, fairy, mushroom. I'm in love with this mushroom. एंड द 3D स्टेयर्स, हाँ मेरा भी फेवरेट है वो ब्लू वाला। It's very सुंदर सा पीकॉक ग्रीन हाँ, ब्लू कलर है। राइट। तो ये मैं इसको वेरी ऐसा प्रिटी स्नेहा। रखती हूँ। Then you can see. So मैं इसको स्टैंडिंग रख दिया है। या सो यहाँ पे आई फील द योर शो स्टॉपर्स आर द स्टेयर्स, पर्सनली मतलब मेरे हिसाब से। ये मुझे ना यहाँ अच्छा, मैं यही बहुत सही प्रिटी बना है। फ्लावर्स है। लगाना या चाह रही हूँ, छोटे छोटे। अपने बहुत सारे हाँ, छोटे ट्रांसफर छोटे। के मेरे बहुत सारे फ्लावर्स हाँ हैं। हाँ इवन हाँ, जैसे आप वो एक्चुअल फ्लावर्स मलबेरी टाइप वाले भी लगाओगे तो भी हाँ अच्छे अच्छे लगेंगे, मतलब करेक्ट, वो पेपर रियलिस्टिक वाले भी थोड़ा आ एकदम जाए। छोटू छोटू वाले बट दैट्स अ है ना। गुड आइडिया, यू कैन डू इट। आई या कैन सो दैट वो you ऐसा can do अलग it से। and then you can show us, हाँ, यस यस मैं yellow or orange flowers. करेक्ट करेक्ट मैं इसको Hmm. Good पिक्चर्स idea वो डालूंगी भी। पहले सो दैट इट मैचेस विद दिस राइट। या या और ऐसे अलग मेरे से को कुछ ये चिपका स्टेयर्स दिया। ने मेरा दिल ले लिया है, मतलब ऑन अ अरे जेन्युइन नोट्स। थैंक यू। फिदा हो गई या ख्याति। हाँ, फिर मतलब बहुत सही आइडिया है यार, नहीं, मतलब क्या बहुत सुंदर सही लग रहा आइडिया है है। वो, उससे वो हाँ पूरा एकदम 3D एकदम उभर के आ रहा है। हाँ, वो एक एलिमेंट ने उसका पूरा लुक पूरा 3D कर दिया, कैसे चढ़ के तुम जा सकते हो। जा मतलब सकते मैं हो। और एक बोलूँ ना तुम्हें तो पूरा कंप्लीट भी कर दो चाहिए तो एज ये तक। और एक यहाँ स्टेयर्स, तक ना हाँ। मेरे को भी हाँ ऐसा मतलब लग रहा है, पर्सनल, अभी देखने से ऐसा थोड़ा वो लग रहा है हवा कि में लग रहा है। हाँ 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 आई विल डू दैट। यस। हाँ, या एंड देन इसको यू कैन काइंड ऑफ ऐड अ कपल ऑफ मोर लीव्स सो दैट वो एक ये भी लीव्स कर के सकती पीछे हूँ से कि स्टेयर्स जा रहा है। हाँ इसको एक ऐसा एंगल भी दे दूंगी सो दैट ऐसा हाँ, घाट दैट्स जैसा लगे ऑल्सो, तो हाँ। ये इसको जॉइन हो जाएगा ना तो हाँ, ऐसा लगेगा राइट कि राइट। यहाँ से जाना है। यस आई कैन डू हाँ, दैट। या इट विल लुक लवली, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है यार दोनों का। मतलब अभी पार्वती आप यस भी हमें जूम करके दिखा दो। बहुत ज्यादा सुंदर है पार्वती, कितनी जल्दी, हाउ कुड यू। मुझसे नहीं हाँ जी। होता ये इतनी जल्दी। वो इसलिए तो बात नहीं करती है खुशी रहती हाँ है लगाने में, डर 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 ये डर डर। ये वो क्लास की वो बच्ची है। हाँ, फर्स्ट बेंचर। दिख रहा है क्या? वेरी प्रिटी। हाँ बहुत दिख रहा है, सुंदर। मतलब आपको, हाँ दिख रहा है। और फिर है ना जूम आउट भी दिखाना क्योंकि आपका जूम्ड इन है काफी, बट मस्त है। सी द आई एम बहुत प्लास्टिक शोइंग। यूसेज ऑफ हers, no, it is amazing the way she has used अमेजिंग। like molds, MDF, plastic, वाओ branches. Guys, like this is interesting, how you like it's true form में makes media. Like मेरा और करेक्ट स्नेहा का करेक्ट। मुझे लगता है similar style हो जाता है. We stick to similar things. हम्म। The way she has used like pearls, आई नो plastic, वो बहुत सही कितना प्यारा, concept है. ब्यूटीफुल। Sunflower के pots भी डाले हैं. Same transfer के. हम्म। Very interesting. Beautiful, beautiful यार, both of you, and like दिख के आ रहा है white and black जैसों का difference for those of you who all have always wanted to know. कविता बोल रही है कि you can use fairy lights here also. हाँ। हाँ एक्चुअली। आप भी यूज कर सकते हो behind the mushrooms, स्नेहा, the या bottom. एक्चुअली ट्रू। यस आई विल ट्राई। हाँ एंड इफ यू सी फ्रॉम साइड्स, हाँ, यू कैन सी वो कितना हाइट और वो सब जो या करेक्ट। उसका बहुत सुंदर बन वो रहा है। है। मैं लैपटॉप पे देख रही हूँ वो इतना सुंदर दिख रहा है पार्वती। हाँ,
पांच छह गत्ते के टुकड़े डाल के ना। या उसकी लेयरिंग बहुत मस्त हुई है। हाँ, आई फील वो हम लोग अगर इसमें भी करते ना तो और आपका भी और लेयरिंग आ सकती थी। अभी मुझे लग रहा है जगह है शैडो बॉक्स में थोड़ी। या काफी जगह है। हाँ हाँ। लाइक काफी जगह है। सो कर हम्म, सकते हैं। कर सकते हैं बट हाँ मतलब दिस इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग लाइक लेयरिंग करके तुम्हारा कितना इंटरेस्टिंग हो गया। यस। वेरी नाइस। उन्होंने वो स्टेयर्स में मैजिक आया है, तुम्हारा वो गत्ते के टुकड़े लेयर करके आया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। एंड आई हैव एडेड Right. सम ग्लिटर्स ऑन टॉप, वो थोड़ा और ये मिस्टिकल वो हाँ, बहुत ही वो सुंदर लग वाइब रहा है वो। देना। ऐसा फॉरेस्ट सीन हो गया। पार्वती, दिस नीडेड अ शैडो बॉक्स, दिस डिजर्व अ शैडो बॉक्स। हाँ इसको मैं फ्रेम करा दूंगी। हाँ डोंट बिल्कुल वरी। हाँ, कराना ही। मतलब अभी तो ख्याति, वी लॉस्ट यू अगेन। हाँ अभी डब्बा गया, अभी वो मेरा जाने ही वाला है, वो भी ऐसे ही चलेगा। बट आई लव बोथ ऑफ देम रियली रियली मतलब या आई एंड अ लॉट लव ऑफ योर्स, इंटरेस्टिंग टेक्निक्स। स्नेहा। आई क्या? लव माइन ऑल्सो या एंड आई लव्ड योर्स ऑल्सो। एंड तुम्हारा द वो बेस्ट पार्ट जो इज द सेम कलरिंग, एलिमेंट्स बट इन सच अ डिफरेंट वे, यू नो, या लाइक एंड दे या आर सेम सो थिंग्स, डिफरेंट है ना। वेरी एंड डिफरेंट। दैट वाज आवर मेन दिस थिंग राइट, कि कैसे लगेगा एक हाँ एलिमेंट शीट को यूज करके, सॉरी ट्रांसफर शीट को राइट। यूज करके। ट्रांसफर और व्हाइट और ब्लैक का डिफरेंस भी समझ के आ रहा है, मतलब ये आज हमारा करेक्ट। यही था मुद्दा और हमने कर दिया तो करेक्ट। सुपर यस। हैप्पी, सुपर हैप्पी। दिस इज अ वेरी लाइक इंफॉर्मेटिव लाइव जो आज हमने किया। वी शुड डू दिस गाइज मोर ऑफन इफ यू गाइज आर रेडी। मुझे तो क्या है, मुझे तो बालकनी के मजे लेना है। या वी कैन हाँ, डू आई दैट। मीन ऑलवेज पार्वती के साथ तो मजा ही आता है मुझे। तो करते हैं हम लोग ऐसे गाइज, वील प्लान इफ यू हैव मोर लाइक इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू वुड लाइक टू सी नेक्स्ट, डू डीएम अस और कमेंट हियर एंड हम लोग देखेंगे। एंड ऑफ कोर्स यू नो वील वेट फॉर द वीडियोस एंड फोटोज फ्रॉम इनका। बंद हो गया स्नेहा का। नहीं नहीं नहीं, मैं फ्रंट हाँ ये कर रही हाँ, थी। चेंज कर रहा था। आप अच्छा, ख्याति, यू ऑल्सो कम। या या मेरा मैं कंप्यूटर पे देख रही थी। बाप रे। तो मजा आया मेरे बाल देखो ऐसे ऐसे खेल खेल के। मेरा भी इधर उधर था, मैंने फटाफट। मेरे बाल खोले ही नहीं इसलिए। इंटेलिजेंट। ये बट मेरे बाल बनना खोले और भी भयंकर लगेंगे इसके लिए खोल के। मैं आज बाल धोई तो मेरा सूखा नहीं है अभी, तो खुला ही। फर्स्ट डे वैसे भी ऐसे ही रहते हैं ना, इट लुक्स गुड ऑन नेक्स्ट ऐसे मेरे तो ऐसे हो जाते हैं फर्स्ट डे, ऐसे ऐसे हो डे। जाता है ऐसे। सेम आई। इसीलिए मैं लाइव लाइव वाले दिन कभी बाल नहीं धोती। तो कितनी प्लानिंग लगती है लोगों को क्या पता। नो वन नोज। मैंने भी कल धो लिए थे बाल इसी चक्कर। मेरे साथ जब वो हफ्ते में 3 लाइव होते हैं ना तब यही होता है कि मुझे में। प्लान करना पड़ता है। तो इट्स वेरी एक्चुअली गुड फॉर यू ना, पहले से प्लान है कब बाल धुलने। So, matlab feedback, guys. Journaling, one thing is what people want to see, so we या can plan that. And I think मेरे हिसाब से एक रस्ट और पटीना करते हैं अगला। अभी now that they are back in stock, we can plan, मतलब हम लोग ग्रुप में करते हैं। जर्नलिंग, स्नेहा, जर्नलिंग। नहीं नहीं, आई एम ओके विद दैट, कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा, चाहिए कर लो चाहे वो कर लो। हाँ अभी नहीं आ कल रहे हैं से करते हैं। रिक्वेस्ट कि जब तुम रील शेयर करोगे तो टिंकर बेल म्यूजिक डालना, बड़ा मजा आएगा नाइस। डन। रील में। नाइस नाइस, यस। So thank you guys for being. It's been like more than 2 hours. I mean, I did not expect people to stay this long. So आई नो। thank you, and I hope you know people learned. Like there were a lot of people. अभी ऊपर नीचे हो गया because we are almost close to hours. But thank you for all of those you know who stuck out, and thank you for your feedbacks in terms of products. हम लोग you know we are listening to you guys. कब आएगा पता नहीं, but कोशिश जारी है. As an Indian brand हम लोग कोशिश कर रहे हैं. यस।
So thank you. I don't know if I'm audible now any longer, You are. but I'm You okay. are. Okay. क्योंकि मेरा अभी बैटरी गया है, लो का आ गया आवाज. So मैं रखूंगी. You guys can comment down what you want to see. You guys can DM us. We'll take your DMs, and yeah, we'll plan something again. Yes. Done. आप लोग भी बोल दीजिए. Thank you guys for such great project. Thank you, thank you. ये पार्वती, मैं And ना फिर से ये लाइव अब आज ये वाला देखूंगी टू वॉच योर्स प्रोजेक्ट। इतने सुंदर एलिमेंट्स और ये सब है, मेरे को तुम्हारा देखने के लिए तो फिर से देखना ही पड़ेगा। आई म्यूट फिर से और देखूंगी। एक बार हम लोग फ्लिप भी करेंगे. ब्लैक जेसो एंड व्हाइट जेसो. हाँ, नेक्स्ट मैं वाइट करूंगी। It मेरे को will भी be ब्लैक fun. ब्लैक मतलब it मिलता will be रहता है, fun. मैं भी तो तो white फिर वो मॉस वाला करेंगे तब आई यूज ब्लैक। तो मतलब उससे हाँ, अभी नहीं, थोड़ा टाइम में हाँ करेंगे. हाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाने दो. थोड़ा आप आ एक्सपेरिमेंट कर लो एक दो. आ जाएगा आ जाएगा। अरे बट वो विल डू. करती इट विल है, बी फन. ऐसे नहीं है कि वो नहीं करती, करती तो है तू। वो सब अपने हम्बल होते हैं, मुझे पता है. हम सब हम्बल है. ऐसा हम हाँ। बोलते नहीं. करती हूँ पर सालों बहुत से कम सब से, करते रहे. हाँ, कम लाइक करते हो. साल में 2 बार ऐसा। जब मुझे ऐसा अंदर से तो आता है ब्लैक जैसो तो यूज वो पहली बार इस साल का हमारे से शुरुआत होगी और कर। क्या. थैंक So यू, thank you guys थैंक यू सो once again. मच। I mean, we have gone above and beyond, but thank you guys genuinely. थैंक मतलब यू आपने गाइस, जितना यस। in depth बताया in terms of products end to end, I really appreciate. Like I know people don't do that, so like I know other brands also, and foreign artists also, they don't give out their trade secrets. So thank you for like sharing wholeheartedly कि बाकी लोग भी उससे learn होके they can make something. So एज अ ब्रांड ओनर थैंक यू कि आपने इतने अच्छी तरह से हमारे प्रोडक्ट्स को भी डिस्प्ले किया सो दैट पीपल आर एबल टू सी नहीं, इट दिस ऑल्सो. दिस पर्टिकुलर ट्रांसफर शीट जब मैंने देखा, हम दोनों ने खरीदा हम है, राइट? दिस दिस डिडंट इवन कम मेरा विद अभी द तक ईटी नया किट, चीज. आई मतलब नो हाँ। आई नो एग्जैक्टली. मतलब बट वी वर सो क्रेजी, मतलब ये देख के ही मेरे को था कि ये इसको तो मेरे ये को तो यूज करना बनेगा, है। हाँ ये हाँ, तो ये बनेगा नॉट ये। स्पॉन्सर्ड है ये. मतलब फॉर हाँ, दोज ऑफ यू, हाँ, मतलब नॉन इतना अच्छा स्पॉन्सर्ड। है कि नॉट स्पॉन्सर्ड है. Right. So या we have bought these. Sneha bought a couple more, I think, वो या coffee वाला स्नेहा और वेंट वो। क्रेजी. आई मैंने वेंट उसको पिंग क्रेजी। भी किया कि यार थोड़े दिन में डीटी किट में शिप करूंगी तो आ जाएगा. आई एम स्टिल वेटिंग फॉर फ्यू मोर लॉन्चेस टू बी डन. तो शी इज लाइक नहीं यार मेरे को चाहिए था. Yeah, लाइक यार ऐसे I वरना. was sure कि ये मेरे को चाहिए ही चाहिए। बाकी I went and bought a few stencils, one चॉक mold, पेन्स. chalk, हाँ, chalk pens I went crazy this time। मैंने हम्म. 6-7 कलर्स chalk pens ले तुम्हारी लिए। सारी स्पेंडिंग हैबिट्स मुझे पता है ना. मतलब मेरे पास And आते हो तो मुझे सब पता है. वो प्रीमा डाइस ले के लिया मैंने। मोल्ड्स। हाँ. बहुत सुंदर सुंदर डाइस आए इस बार। हाँ. तो आई बॉट डाइस, वो हार्ट वाला, हार्ट वाला. द You राउंड sent me वन। photo also, na, the या या project you या made with that. या ओके, सो आई गॉट अ कस्टम ऑर्डर फॉर अ ऐसे ही कार्ड। आई Yeah. वेंट क्रेजी फॉर दैट कॉफी थीम वाला जो है। या आई वो रिमेम्बर। वो तो आते से दूसरे दिन मेरा आते अर्जेंट हो यूज गया। भी हो गया. मुझे बहुत आई वाज लाइक ये तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो ख्याति ने पिंक किया, मैंने बोला नहीं खत्म हो जाएंगे, मेरे को चाहिए। एक्चुअली वो उसके साथ हो गया था ना. फोमो हो गया अभी लोगों को वो हाँ मेरे को बहुत फोमो हो जाता क्रिसमस वाला. है। ये दिस वन आई डिडंट वांट टू मिस आउट, फॉर द सेम हाँ रीजन हाँ आई बॉट दिस वन। लेकिन अभी आई मैंने किट में दोनों को क्रिसमस डलवाया है, या जो भी मुझे याद है कि अभी मुझे डालना है. कि लास्ट टाइम तुम दोनों का मिस हो गया था और हम मुझे दोनों दोनों ने बोला है. तो हाँ, मुझे हाँ। याद है कि अभी इस बार मैंने इसीलिए ना उसका ज्यादा स्टॉक भी करवा के रखा है कि अगले किट में वो आएगा ही. थैंक इट्स अ यू। थैंक वेरी यू, ब्यूटीफुल. थैंक यू। और ये एंड देखते ही मेरे दिमाग में वो खुजली चल गया था कि मेरे को 3D प्रोजेक्ट करना है, इसलिए फिर हाँ. मैंने वो बट स्नेहा के थैंक ऊपर भी डाल गॉड, दिया। थैंक यू। अच्छा, अच्छा. हाँ मैं पलट गई हूँ वो बात अलग है, पर थैंक यू। ये तो तुम्हारा थैंक यू प्यार गाइस. हम बरकरार लोग को तो रहे। तुम 3 घंटा और रखोगे तो हम तो बातें करते रहेंगे. हाँ, सो हम तुमको नहीं बोर करना चाहते. हमारे अलग चलते हैं ऐसे प्राइवेट कॉन्वर्सेशन. सो वी थैंक यू वोंट सो बोर यू मच विद दैट. गाइस जो भी आए इन दिस लाइफ, स्टेड थ्रू आउट। कविता तो आई नो दे आर फ्रॉम, स्टिल हियर, या सेम पीपल, हाँ, दे आर स्टिल हियर। कविता, सुप्रिया, कविता, नीरजा वेर
from like Nirja joined in a bit late because she was waiting on Instagram. But I think all three of अरे them were there from even Shalu was there अरे Shalu from मैं also, start to end. yeah. मैंने बोला भी था कहीं पब्लिक इंस्टाग्राम पे ना रह जाए। इसलिए मैंने हाँ, एक्चुअली right. फोटो में वो इस आइकन्स भी डाले थे बट फिर हाँ भी मुझे लग रहा है हम लोग मिस व्हाट्सएप पे करा भी इसीलिए दे लोगों को रहे। भेजा भी था बट वो माय आदत है ना मदर इंस्टा आल्सो की अच्छा यूट्यूब पे है, शी वाज आल्सो अच्छा, मैंने बोला यार डिफिकल्ट फॉर ये सब देम टू सी या लोग इससे कम ना हर बार लाइव कर या आ जाते हैं। So guys, feedbacks are always welcome. What you would like to see next, batana. Art journal we'll do one swap, and I want to do like rust patina and moss, like one black, one white. वैसे करके we'll plan अपन something. ऐसे भी करते हैं, किसी दिन you join one of us and the other one can be the या एक्चुअली comment reader. या वैसे भी कर सकते हैं अपन। या अच्छा इधर मेरे को ख्याति क्लास में बनवा लौ के दिया मेरे को होमवर्क दे दिया ख्याति से बनवा के रहे। ऐसे नहीं छोड़ेंगे हम। ओके ओके आई मीन मेरे को एक्चुअली आई एम इचिंग टू यूज पटीना एंड रस्ट अगेन मतलब इसीलिए वो हमें समझ आ रहा है कि you also want to यू do it, ऑल्सो तो लाइक हाँ इसलिए हर so we don't लाइफ want में to शी इज लाइक हड़प। मुझे ये बनाना है, मुझे भी ये हाँ, I'm thinking art journal we'll do na I'll also do like I can manage both it is not that difficult मतलब between three of us I think हम लोग कर लेंगे करेक्ट तो करेक्ट। हो जाएगा मतलब चैट में देख लूंगी इतना डिफिकल्ट नहीं है आर्ट जर्नल में कर सकती हूँ तो विल आर्ट जर्नल आई ऑल्सो डू मेरे को भी मजा आएगा विल प्लान समथिंग डन। हम तीनों बोलते रहेंगे तो मुझे लग रहा है सुनने वाला तो हम लोग काटते ही हाँ, रहेंगे ऐसा लग बाय रहा है बाय ही कर लेते। You cut हाँ the थैंक यू call. गाइस अरे विल अभी प्लान 9 समथिंग एंड विल वॉचिंग था, कम बैक सून 11 वॉचिंग हो गया, कैसे हो सकता है? हाँ अभी 12 हो गया ये भगवान। लोगों को बककर ज्यादा मजा है लोगों को अपनी बकवास ज्यादा पसंद आ रही है। So, no, no, now we'll stop. Thank you guys. As always, it was great. Thank you, Parvati and Sneha, for such beautiful Thank you projects. guys. थैंक We'll यू। definitely plan something soon. It was And fun. thank you Thank so much. you. Yes, yes, we'll यस wait Bye. for the थैंक यू videos सो to मच। show all the details and the यस flowers and all that additional things you do. यस आई विल। And we'll wait for them. And thank you guys. Now I'll keep the I'll end the live. Thank you so much. Bye. Bye.